मेरे को जरूर करा देंगे। हाँ नहीं वो यही मैंने कहा, बेगम अगर बेवा हो मीन मैं मर गया हूँ ना। मैं क्या वो हो ना हो, ये तो उनकी वाइफ तो हो जाएगी। हाँ तो मैंने कहा मेरी करंट वाइफ नहीं वो होगी, अपनी मर्जी से होगी, अपने भाई की ना बार-बार कैमरे पे तो भी हो। ओ होने दें, डजंट मैटर। कुछ लोग ये मजाक समझ नहीं पाते ना, कुछ लोग तो इतना सीरियस नहीं लेते ना, तो क्या बात कर रहे हैं। मैं जो नहीं परवाह, मैं किसी को सीरियस लेता ही नहीं। क्योंकि आप ना इट्स हाईली स्ट्रेसफुल जॉब है, लाइक दिस इज लाइक यू कैन लीड पीपल गेट एंड दैट। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, शायद मेरा इन अ वे प्रोफेशनल शायद अगेंस्ट रही है। मैंने क्या कर दिया है कि भैया हम लोग ना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज के अंदर, तो कई बार अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन मेरे केस में मेरे को लगता है हमेशा उल्टा ही पड़ा है। तो इसलिए ज्यादा एक फुल एक्साइटमेंट का मसला ही नहीं है, इजी रहें चीजों को। जितना लाइफ में उसको स्ट्रेसफुल बनाएंगे ना, उतना स्ट्रेसफुल हो जाएगी। और बेस अप है, प्रेशर लो है, तो आपको पता है बेस अगर अप है तो इसका मतलब पीपी से ऊपर, हाँ पीपी से ऊपर खुल रही है, और प्रेशर लो है तो मतलब कि चांसेस आर के ये नीचे जाएगी। ठीक है। हाँ, कल मेरे को सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया, लेकिन मुझे बोलते ना बेस अप हाई, लाइक यू नो लाइक प्रेशर अप। बेस अप का मतलब है पीपी से ऊपर। हाँ, प्रेशर है कि मतलब कि नीचे जाएगी बाकी जानी चाहिए। हाँ। तो अब ये आ गया आपका 18,150। वो ये सोना के बीच में घूम रही है अभी मार्केट अभी भी। All right, let's see. अभी कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मेरा जो चार्जर है ये लैपटॉप का, ये वाला चार्जर है, ठीक है, और ये 3 पिन वाला चार्जर है। हाँ। अब गाड़ी के अंदर मेरी जैसे 2 पिन का चार्जर होता है, राइट? तो जैसे 2 पिन का प्लग जैसे यूएसबी, हाँ नो प्रॉब्लम। अगर ये जैसे इसमें यूएसबी सी वाला नहीं वो कि उसमें ना वोल्टेज नहीं होती, तो अगर तो आपके पास वो 120 वोल्ट है जिसमें जो बिजली वाला है वो चलेगा, लेकिन अगर आपका खाली यूएसबी चार्जर है वो इससे चार्ज नहीं हो सकता। नहीं, जो उसका जो प्लग है जो वो 2 पिन वाला प्लग है, हाँ, 150 वोल्ट का। हाँ, अगर मैं जैसे 115 वोल्ट का प्लग लगा के, हाँ, वो चल जाता है से, yes, और ये यूएसबी के अंदर लगा दूं, मुश्किल होगा। नहीं उस तरह नहीं होगा। आपको बकायदा आउटलेट मिलते हैं कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, आप वो गैस लाइटर वाला लगा देना, उसमें से 120 निकल आता है। तो और उसमें मतलब कि वो गैस लाइटर से 3 पिन वाला, हाँ, और उसके अंदर एग्जैक्टली ये तो कई बार जो घूमने नहीं आता है, ये लैपटॉप बहुत ही जगह होता है। हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मैं तो उसी को यूज करता हूँ क्योंकि उसका वो लैपटॉप चार्जर है, उसके अंदर 3 प्रॉन्ग निकल आता है। हाँ। मेरे ये मैकबुक वगैरह चार्ज हो जाते हैं। तो हाँ, $15 अमेज़न से मिला। आप वो हो ना, तो मैं आपको देखूंगा, आपने पैसा ले, आपने अमेज़न से लिया था? अमेज़न से। मैं एक दिन दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए ये वाला सही है? कोई भी ब्रांडेड हो, $15-20 का मिलता है। $18 का लगा था। हाँ, मैंने देखा था। ये वाला 100%। या नहीं ये नहीं है। मैं मेरे घर में 2 प्लग वाला ही प्लग है, वो 115 का है। हाँ, तो अगर उसके अंदर जा सकती है डायरेक्ट। हाँ, आपको या आपकी 3 प्रॉन्ग वाली है। हाँ, क्योंकि ये ग्राउंड है ना तीसरा। ये 2 से 3 वाला है। हाँ, फिर ठीक है, चलेगा। क्योंकि मेरे को है ना कि सेकंड वाला जो ये होता है ना कि वो तो यूज करो ना करो, फिर वो चलता कभी नहीं चलता। चलेगा। 2 पिन वाला है ना इसके अंदर ना। हाँ, तो इसके साथ ये चल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो शॉप कौन सी है, वहाँ पे चले जाए, वो आपको सारे सॉल्यूशन दे देंगे। तो वो जो है ना कंपनी पे कौन से मैजिक कंप्यूटर। हाँ, तो वो भी आपको सेट कर सकते हैं।
तो इफ हमें मेरे को बुक करना है, मेरे को एड्रेस या उसका फोन नंबर मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। श्योर। आज मार्केट स्लो ही है, आपने बताया था आज की ना। नहीं, आज तो लॉन्ग वीकेंड का अब शुरू हो गया है ना। हाँ। तो मे नॉट बी। आपको लगता है कि इसकी ये लेजेंड की सेल और भी आएगी जैसे बीच नहीं, ये सारों ने तकरीबन लगा दिए। जैसे पता ना बीच में कभी 19-20 साल की भी आई थी, वो रेयर है, वो 90% होती है रेयर। ओके, चले शुरू करते हैं। All right, good morning everybody. Thursday, April 17th, 9:07 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Let's take a look at where things are. So last night, Powell's speech came around 1 o'clock and the market took a big dip from down below even S2. Anyway, let's see what market did last night. 18,650 is our number for up. You have 18,350 for the number 2 down, 345. 345. So last night, and Nasdaq moved 300 points. Where are we right now? 18,500. So very right in the middle of R1 and S1. Now today, what is ES? ES you have high as 71, low as 95. Let's put it as 93 exactly. So let's say if I was to do it, so 70, 53, 72, 52, 90. 80 point swing on ES last night. Let's look at the areas are updated. I will definitely see what's going on here. बिकॉज जो रीसेट की बेचते हैं ना कि आप अकाउंट डेड हो जाए तो हमसे 450 ले लें, 450 में 100 डाले बंदा, 550 में पर डिया ले ले, पर डिया भी उतने का ही पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग। पर डिया ये 450 का रीसेट करवा रहे हैं, 550 में पर डिया मिल जाता है, वो उसमें 1500 का इस तरह शोल्ड है, तो आपका इंस्टेंट पीए बन जाता है। तो मैंने ग्रेग से जीएफओ वालों से यही बात की थी, तो अब बहुत महंगा दे रहे हो। जो रीसेट है, मास्टर रीसेट 450 का है, बंदा सिर्फ 100 और डाले पर डिया में चला जाए, क्योंकि एक तो स्टेज 1 है, ठीक है, आप भी इधर स्टेज 1 में आओ, लेकिन इसमें यह है कि आप 1500 के बाद आप डेली पे आउट ले सकते हो। तो मैं इधर 450 क्यों दूं? तो वो मुझे कोई कहता है ना कि यार रीसेट करवा लूं, मैं कहा नहीं, एक तो 450 दोगे, दूसरा तुम जो उसमें कितने ज्यादा अकाउंट आ सकते हैं, एटलीस्ट 5 टेक प्रॉफिट आ जाएंगे। तो मैं जरा थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन में रहता हूँ कि एक आपने कैलकुलेशन और मेरे को समझना है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय लाइव ट्रेडिंग? अच्छा, वो आसान तरीका है। आपने ट्रेड डाला, अभी क्या प्राइस चल रही है 53.20, आपने यहाँ से कर दिया शॉर्ट, ठीक है, प्राइस नीचे आ गई, आपको उसने 250 का पीएनएल दिखाया, आपने बंद नहीं किया, करते करते वो बंद हुई $100 प्रॉफिट पे, ठीक है, अब आपको टेक्निकली 100 का प्रॉफिट मिला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आपके लाइव, आपका जो थ्रेशोल्ड था ना 1500 में, 150 काट लिया। अब आप जाएंगे ट्रेडो वेट पे, जैसे ब्रांड न्यू अकाउंट है, आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, मैंने तो 100 का प्रॉफिट बनाया था, मेरा थ्रेशोल्ड 150 नीचे कैसे हो गया? उन्होंने देखा कि आपने एक 1 पॉइंट पे 250 देखा था और ट्रेड को बंद नहीं किया, तो वो आपका ट्रेडो वेट ना लाइव जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है ना,
वहां से अनरियलाइज पीएनएल से कंसिडर करता है। तो वर्ड ये है कि अनरियलाइज, रियलाइज पीएनएल क्या होता है, आपने बंद कर दिया। अनरियलाइज पीएनएल क्या होता है, आपका एक ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर से चलते हैं। तो सर इसमें फिर ऐसे तो मतलब अगर आज दिन का सपोज करो मैंने $400 भी कमा लिया, हाँ, लेकिन देयर वर सर्टेन स्टेजेस Yes, जहाँ पे मैंने वो- $400 तो मैंने 4-5 ट्रेड में कमाया, लेकिन उसमें 100 कैसा रह गया, जो मार्केट हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको आप वो 1500 ना रखें, समझे वो 1300 है, क्योंकि ऐसा रहेगा अनलेस कि आप हर दफा चार्टिक्स ले रहे हैं, फिर इसी में आप रहेंगे कि आपका थ्रेशोल्ड खराब। ये सारी कंपनीज एपेक्स, लेजेंड, बुलनॉक्स, पर्डिया टेक प्रॉफिट 1500 के बाद ना वो लाइफ थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि आपका फॉर लाइफ ऐसा चलना है, जैसे ही उनका उधार आपने वापस कर दिया ना, आपका लाइफ थ्रेशोल्ड खत्म। तो देखिए आपने क्योंकि इवेंचुअली तो आप कैचअप कर जाएंगे ना। तो जैसे ही आपका 1500 ब्रेक हुआ पीए के अंदर, तो लाइफ थ्रेशोल्ड खत्म हो गया, अब वो नॉर्मल अकाउंट की तरह हो गया। तो सिर्फ वो पहले 15 के लिए जो है वो 2000 नहीं, लेजेंड में आपने 1500 बनाना है। जब पीए में इन्होंने 1500 कर लिया ना, फिर ये 50 देखें, 0 पे बंद करे, 0 मिलेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, वो उसको ट्रीट करते हैं रियल अकाउंट की तरह। मतलब इसमें ईए के अंदर ये पंगा नहीं है। ईए में तो उसको, क्योंकि मैं इसलिए लेजेंड देता हूँ, एपेक्स नहीं देता, क्योंकि लेजेंड में पहले ही वो बंदा उसमें एक एडिशनल हेडेक डाल ली ना। मैं कहा यार 7 दिनों के लिए ये हेडेक तो ना लो ना कि लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है। अगर मेरा पास चले मैं सारों को पर्डिया पे डालूं पहले, लेकिन मुझे पर्डिया नहीं पसंद, महंगा है। एक बिगिनर्स के लिए $33 ठीक है, या 100 ठीक है, 500 नहीं सही। लेकिन पर्डिया में भी लाइफ थ्रेशोल्ड नहीं भी है। नहीं, पर्डिया एक वाहिद कंपनी है, डे 1 से आपको एंड ऑफ डे देती है। क्योंकि वो लाइव अकाउंट है ना ऑलमोस्ट, तो उसमें बट है उसके बाद भी वो 1500 के बाद ही आप अर्निंग कर सकते हैं। करेक्ट। वो जो तरह 750 का जो भी तरह है वो क्या चीज, पर ईयर 650 750 तरह है उसको है ना, वो 550 का मिनिमम है। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? सॉरी, 10:30 जो नेचुरल गैस स्टोरेज की न्यूज़ है वो हमारे लिए नहीं, वो ईएस, नैस्डैक, डाउ, रसल नहीं है, वो सिर्फ जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना नेचुरल गैस। 11:45 कोई मेंबर बात वो स्पीचेस हैं। तो आज मेरा ख्याल है मार्केट नीचे ना रहे, क्योंकि डाउ काफी गिर गई है। तो बाकी आज की न्यूज़ मॉर्निंग की तो हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट कम आई, मीनिंग कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 225 215 आई। बिल्डिंग परमिट ज्यादा आए, तो एक न्यूज़ गुड है, लेकिन डाउ नीचे है। तो जो ओवरऑल मैं ट्रेड करूंगा, वो जब एक्सपेक्टेड लो पे जाएगी ना, वहां से बाइंग शुरू करूंगा। तो मैंने आपका प्लान ये सोचा है कि आज एक्सपेक्टेड लो से खरीदेंगे। अब वो अब आए 9 बजे आए, 10 आए, 11 आए, जब भी है, क्योंकि मैं एरिया ट्रेड कर रहा हूँ। तो इस दौरान जो है ना, वही बॉटम ऑफ द बार, ग्रीन में बॉटम ऑफ द बार। तो अमाउंट तो भी 4950 दिखा रहा है उसका। नहीं, सुपर एरियाज 70 डाला है, 80 डाला है। जरा एक मिनट, सुपर एरियाज 80। कोड भी तो डालना, कोड ऐड किया ना। This coupon has expired. फिर 70 डालें। 70 में फिर वो 4950 दिखा रहा है, $50 दिखा रहा है। कैपिटल बना दे, कूपन तो ले रहा है ना। ट्राई ईस्टर करें, EASTER कोड को, सिर्फ ईस्टर। हाँ, उस पे आ गया।
ये भी सेल होती है थोड़ा दिन चलती है या वो नहीं ये हफ्ता फिर चलाते हैं ना। क्या 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 कह रहा है? ओपन किया मैंने एक बार सारा पासवर्ड डाला, अभी दोबारा करके कि ऑलरेडी देयर कैन बी ओनली वन। नहीं वो ऑलरेडी वो निंजा खुल रहा है अभी तो आपने वो डबल क्लिक कर दिए तो हाँ जी। लेजेंड्स अभी सेल लगा हुआ 80% पे, वही ट्राई कर लें। हाँ सुपर एरियस पे उसका पासवर्ड ईस्टर है बस ये। हाँ कूपन कोड ईस्टर 80%, $33 का पे आ गया। हाँ जी यहाँ पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। हाँ पहले ऊपर से रजिस्टर करें। ईएस के अंदर R2 को ब्रेक कराया पर लेकिन ज्यादा ब्रेक नहीं कर रहे थे। 32 पे था, 32.75 तक गया है। हाँ मैं असल में एरिया देख नहीं पाया, एक मिनट।
बिल्कुल मिडिल में फिर रही है, बिल्कुल। ऑटो ब्रेक कर दिया इसने ना। All right, so what is the game plan today? Expected low, sir. Game plan for Nasdaq definitely expected low. Dow बहुत बुरी गिरी हुई है, तो अब डाउ का नंबर देखें सर, माइक्रोस MYM, लेकिन डाउ S2 से नीचे गई हुई है और वापस आ रही है, तो इसका मतलब है कि चांसेस आर के ये नीचे जा सकती है। तो जो नैस्डैक कर रहा है एक्सपेक्टेड लो पे रहा है। कल 2 बजे कोई ट्रेड लिया आप लोगों ने उन पावल की न्यूज़ पे? पावल की न्यूज़ पे ठीक है, ठीक रहे ना? हाँ। नहीं, लेकिन वापस आ गई सी, मैं भी लिया सी 2.35 थे, मैं लॉन्ग कर देता वो पहले। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं इनफ सीगा, मैं क्या आई कैन होल्ड इट अंटिल 4। हाँ हमें 5 माइक्रो पे तो प्रॉफिट से निकलूं। ठीक है, मैं तो मिनी, आपको पता है मिनी वाला तो हूं नहीं हूं, तो किधर घूम रही है ES? सर मैं अभी देख लेता हूँ आपके लिए ES में ये कल 4 के बाद ES नहीं, अभी तो सेंटर में है सर, अभी तो सेंटर बिल्कुल R1 और S उधर खड़ी है कोई 37, R1 है आपका 83, S1 है 53, तो अभी बिल्कुल मिडल में है। हाँ अच्छा जी, ये और जी MNQ कहाँ खड़ी है, एकदम गिरी जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं?
Good morning, guys. Good morning. Namaskar, Sat Sri Akal. Hello, guys. Walaikum Assalam. Jai. Good morning, Ji. Vikas, good morning. Tamil Bhai, Kesh, good morning. Ash, Shinder Ji, good morning, Ji. Harleen, Alpa Ji, good morning. Jagdeep Ji, good morning. Choisa, good morning. Amir Ranjit, good morning. Anjum Bhai, Manpreet Ji, good morning. Ji. Zakir, good morning. Sunil Rizwan Bhai, good morning. Majid, good morning. Samir, Clifford, Ji, good morning. Sayyid Ali Ji, Abbas Bhai, Nina Ji, good morning. Good morning, everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you, and we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions, and don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses, and do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell areas or buy and sell offer. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, Nasdaq, Dow really got hit because of one of the biggest health insurance company in US is losing almost 20% in one day, and that's why we had the 30 companies, and one out of 30 is just crashing now. From 4 a.m. till now, around 1,100 points pushed to the downside in just few hours. That's a big push to the downside. Even yesterday, all day, we have 1,128, retracement 708, and right now, almost 1,098 points pushed to the downside. That's a big push to the downside on Dow. And look to go up would be a good strategy. If I look at the areas, S&P 500, 55.50 to 70s high, low is 51.40 to 51.20. Still, we are in a big chaos. It's not clear yet. Nasdaq is 19,320 to 400 is high. Our low for Nasdaq is 730 to 650 low. So low to go up would be a nice strategy today if you want to make good money. News are done. Mostly news are done at 8:30 a.m. We had unemployment claims and Philadelphia manufacturing index. It's red, really red. Red to go down, green to go up. Housing start is red. Red means price should go up. Housing starts mix and match we are getting, but I told you earlier this Monday, this whole week will be a very calm, relaxed. Even this push we have is not much push. Tomorrow market will be closed, and you have to be very careful on Monday as well. So if me, I will start trading from today. If I'm done in the morning, I will stop. Tuesday, I will touch the market.
But overall, you can area to area or hit and run from anywhere. But if you want to be on the safe side, just shut down your brain and go with what system is telling you. If system is telling you to go up, you go up. If system is telling you to go down, you go down. Nasdaq below PP, S&P below PP, Dow is way below, and Russell 2000 sitting at PP. It means we'll see if from any support area we can get 8 to 10 points and be happy and call for the day. The other markets we have is British pound is above PP and at top of the value area. It just hit our green band yesterday and bouncing back up, and right now just slightly above PP area. Canadian dollar is up, breakout night session high just right now, breakout night session high. And excuse me, sitting above PP area right now. Crude oil, we have to change the contract today, guys. Everybody change your contract to June 6, 25, June 25 for crude oil. And crude oil is in diversion to the downside. Break our high at 2 a.m. and creates a diversion, and right now just pushing down. High to go low would be a nice way for crude oil. And euro sitting at PP area. Euro is below PP, and even though British pound was above, but euro is below PP and sitting at mid-band green and low of the value area. FDAX is down today. FDAX came down. It's a retracement on FDAX, and FDAX is in a very strong diversion. Gold pressure is down. Gold pressure is down. Gold and went up. That's in history for gold. $143, almost $44 in swing to the upside. That's a big push. 33.70, 1.90 cents. That's a big push to the upside. So gold, we might see our expected low. The best is high to go low if you want to go on a sell. In my opinion, everybody know from 2006, I have one strategy for gold. If you want to make money on gold, just go long on the gold whenever gold drops, because gold is only one commodity, on this planet that has only one way, and that is to the upside. FDAX diversion to the downside, so FDAX we'll see again further push to the downside on our FDAX. Copper, the copper is pushing up below PP, and right now just sitting below PP area. And you remember, usually our silver and gold move in same direction, but silver is moving with the copper. If you take out the copper and silver, they're just moving together below PP. And right now it's pushing up. Sometimes it happens. Silver usually moves with the gold, but today it is moving with our copper. Natural gas was down. Natural gas in diversion on diversion. So we got our triple diversion and on our bigger time frame diversion. So right now natural gas is sitting at PP, and get inside the value area. Remember, if it get inside the value area, it means 29 cents, $3.29. I'm expecting a push to the upside. Bitcoin above PP, above green mid-band. Bitcoin is not moving much. $1,830 swing. That's not retracement. That's not a big push to the upside. Right now, yes, it's above PP, above mid-band, but pressure is to the downside. And then the same thing with the Ethereum. And Ethereum, I'm expecting somewhere 1,700, but not now. Right now, it just hit 1612 and dead whole night. It was just dead, just sitting in between 1590 to almost $20 push up and down, but $73 push to the upside. All night, it's not doing much. And again, guys, tomorrow you have to be very careful. Today, if you're done, just call for the day. It's a very beautiful day outside, sunny. Take your family, go outside, and don't just sit in front of a computer. If you're done, call for the day. And please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. The S1 will be a nice support. Yeah, S1 will be a nice support. Why? Because the Dow went down and there's no retracement. So S&P, Nasdaq, Dow will create a support at S1 area.
and they'll take Dow to the upside. So wait for S1, any number of S1, and just go along from there. Please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. अब इससे क्लियर आपको क्या कहें, वो कह रहे हैं S1 का कोई नंबर पकड़ लें. लाइक देखें, उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि S1 से कोई नंबर पकड़ लें, यू शुड बी ओके. तो अब मेरी ओपिनियन तो एक्सपेक्टेड लो वाली वर्ड हो जाती है. तो ES S1, so that's what we are waiting for. यार Nasdaq क्लोज मुझे बहुत लग रही है. एक सेकंड, नंबर हाँ, लेकिन जो S2 है ना, कल Nasdaq का 18,130, लेकिन कल की जो स्पाइक आई है ना, हाँ वो सेम है, वो S2 में गिर रही है. So I still will take S2. I don't know because it came too close last time. अभी देखे ना 53.11 से आ रही है. So it's okay. S1 is what we are looking for. So because yesterday's Powell speech put us, if you look at yesterday, S2, it went as low as S2. So yesterday's, and then actually went below S2 yesterday. So I'm waiting for S2 for Nasdaq, definitely. Maybe expected low S2 is okay. All right, your Dow almost went to expected low because he said in the morning. So Nasdaq 18,124. Everybody got a signal in. 18,124 is what I'm deciding for M and Q. If you're doing Nasdaq, that's the number I'm pushing. Then S1 he's saying could be a good support, right? So अभी जैसे उनकी करें तो फिर 53 और 4 से 50 to 90. हाँ, अभी ये कहाँ से बाउंस करेगी ये हमें नहीं पता ना. मतलब आगे of course nobody can predict. 53 रख ले in between. Yeah. क्योंकि फिर आपके नीचे स्टॉप लॉस होगा 96 से नीचे, right? So क्योंकि उसी के आसपास घूम जा रही है. Yeah. So I know a couple of guys who shorted Nasdaq right at the opening, right? So OCS वाले भी ठीक है. हाँ, वो OCO वाले इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं. जिधर स्पाइक पकड़ी उधर साथ ले गए. 15 पॉइंट लेने होते हैं उन्होंने. The Nasdaq has gone low as close as 18,380.
18,380. ओपन कहाँ पर था जी? नहीं, मैंने भेजा हुआ है, ये देखिए एक सिग्नल आपका गया हुआ है नैस्डैक का, अगर MNQ खुला हो, हाँ, और 18 था, अगर ना भी पहुंचा हो, मैं वर्बली बता रहा हूँ, नैस्डैक का बॉटम रेंज ले रहा हूँ, 124 ले रहा हूँ मैं। तो अगर लेट्स से 1 बजे तक, 12 बजे तक नहीं आता ये नंबर, तो ये नंबर याद रहे, यहां से हमने बाउंस लेना है, यहां से बाय करना है। आप 1 MNQ लो, 5 लो, वो मसला नहीं है, लेकिन नैस्डैक का नंबर में S2 का बॉटम, क्योंकि where that's landing is yesterday's spike of Powell's number is landing inside S2, right? So this is where I picked up this number from. If you look at Nasdaq, it fell down like 200 points in an instance. वो जहां जाके खत्म हो रही है ना, वहां पर आज का नंबर शुरू हो रहा है. So 18,000, it's a big range, but I'm picking the bottom range. अब यहाँ आए ना आए, अब हमारी किस्मत का खेल है ना, कि तो कंप्यूटर ने हमें कहा यार अगर यहाँ से बाई करोगे ना तो सस्ता है, अच्छा है. So I'm going with the computer prediction this time. Okay, shot back up, nothing we can do. From 380 to almost 480, shot back up. 18,500 पे ओपन हुई, ठीक है जी. 18 तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट गिरी, एंड we're back to almost same. तेज भागे बाद भी छोटा लग गया. ES के अंदर तेज भागे बाद भी छोटा लग गया. So this time it fell from how low it goes, 5309. Bounce from there. Let's see. अभी जो ये स्पाइक चल रही है 5311 से चल रही है. Yes. One more time, trying to hit. Sound is low. It's normal. Should be okay.
Sound settings. Audio should be okay. One more time trying to test S1. This would be our almost third attempt. If I look at a 5-minute candle, this is so this is almost first, second. Let me change the time. 8:47. Time. Anybody has plans for holiday? नहीं? बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ। बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे हैं। हाँ। और कनाडा में आप बच्चे ओन करते हो एज 17 तक, 16 तक। You have an ownership, that's all I care. 16 के बाद वो आपके नहीं है। मेरी बड़ी बड़ी थ्योरी है। 16 तक आप बच्चों को ओन करते हो, फिर वो लाइबिलिटी बन जाते हैं एसेट से। कल मेरे बेटे ने पर्डिया फिनिश किया ना, तो वो जिंदगी में कल इतना खुश था, कहता कि मेरी नेट वर्थ $1500 हो गई। क्योंकि उसने 1500 लिया किया सी ना, ते उन्हें चौथी अटेम्प्ट किया। पहले ते 18 साल तो आया, उन्हें 5 माइक्रो फुल करके बड़ा ना वो ऐसे बैठता था कि ट्रेडर बन गया है। मैंने उसके कजन के साथ बिठाया, मैंने कहा वेट कर, तू 2-3 लूज करेगा ना तो सही। तो कल चौथी अटेम्प्ट में उसने जब पास किया ना, तो वो बड़ा खुश था, कह रहा है कि अपने दोस्त नहीं वो कह रहा है मैं लाइफ पे जाऊंगा, क्योंकि आज उसका जिंदगी का वो पहला 1500 था जो उसका अपना है। राइट मीन वो कहता है कि मेरी अपनी की नेटवर्थ 1500 है। मैंने कहा इतने का तो जाके स्टेक खा जाएगा तो 4 दिनों में। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, उनको तो ये कितना खोया कितना। I'm taking S2, so वहीं पर घूम रही है ये R1 S1 के दरमियान। अब ऐसे मिड बैंड चला है, अभी हायर हाई से आके उसने अब वो थोड़ा मुझे मिड बैंड पे ना वापस नजर आ रहा है कि नहीं। स्पीड ट्रस्ट तो हमेशा है, पहले एंटर नहीं कर पा रहे थे। 30-20 का प्रीवियस मिड बैंड भी चला। ठीक है। So again, the number to watch for me is Nasdaq 124. Yep, 18,124. अभी तो S1 नहीं आया, बाकी बात की बात है। I may push it up a little. कल का लो कितना था इधर? 18,118. So 124 is good enough if it goes there.
तो आप सारों के पास हैप्पी की भी चैट की एक्सेस है आप superiors.net पे जाएं, NQ वो वहां करवा देता है, लिख देता है चीजें, so you guys can all log in. हायर बनाया है 30-20 पे, अभी नहीं, वो देखें एक और मिड बैंड ग्रीन, लेट्स सी. मेरे तो रिवर्स चली गई है, मैं नीचे लगा था 4.5 करके ना, ये रिवर्स चली गई. दोबारा जहाँ ओपन हुई थी वहीं पर खड़ी हो गया. A good resistance would be at 56. पिछली पीक देखें, 8 बजे की कैंडल जो 5 मिनट वाली है ना, वो as high as 53, 56 तक गई हुई है. So I'm just watching that. Let's see if this spike happens in 1 second. And even a 30-minute candle, yes, approximately. But it's okay. Let's see. R1 पे बेचेंगे अगर आया तो. So, because the 60-minute previous candle is 53.55. 1 hour की जो कैंडल पिछली है उसका जो टॉप है वो 53. Let's see where it goes.
Waiting for 3020 to do NSRES because right now it's market smooth है, आपके mid bands slowly चलने लगे. So if you sold there at 53.33, you made your 2 points. बिल्कुल सर 30 सेकंड. All right, match. अभी शुरू हुआ लगता है. मेरे ख्याल शायद उनकी अपॉइंटमेंट ना हो गई. Third 15-10 divergence. डाउ को एक कंपनी वो कह रहे हैं लेके गई है, एक कंपनी. वो कंपनी आगे से नहीं है. नहीं, मेरा मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है. तो आज डाउ के साथ सिंक नहीं है. आज तो हाँ नहीं, ये कोशिश तो कर रही हैं, S1 से बाउंस कर रही हैं, लेकिन कोई खास जो है ना. आजा, ब्लैक कैंडल नीचे दे दे, ब्रेकआउट खड़ा हूं. डबल बॉटम. कोई न्यूज़ तो नहीं है 10 बजे की कैंडल पे? नहीं क्या 10 o'clock 1 आवर की कैंडल खुली ना? नहीं न्यूज़ सुबह गुजर गई.
क्या हुआ होती है कि नास्डैक वो Nasdaq की तो नीचे आई है। गोल्ड वेदर मैंने शॉर्ट किया $64 भागी जाती है शॉर्ट पे। ये वो ना S1 टेस्ट करना चाह रही है बार बार, वो भी बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। Yeah, somebody confirmed it is inside S&P. So
मैंने बॉटम ऑफ द बार Yeah. मिस कर दिया. Yeah. देख आपने लिया बड़ी तेजी से top of the bar. Yeah. Because that from that top of the bar on 30-20, that's almost like 4 point है. गोल्ड ने कल सही रुलाया काफियों को. 3370 हमने कितनी गई कल? 3357. One more time, guys, towards S1. Let's see if this time it penetrates or. ये चार्ट्स के अंदर जो मैंने एक स्ट्रेटजी लगा रखी है, जैसे कई बार ये स्विच करते हैं ऐसे सिमुलेशन और उसके बाद अकाउंट के अंदर एटीएम स्ट्रेटजी अपना मन पे क्यों आती है? उनका डिफॉल्ट है. Because if you are trying to set up with a different account and you don't want it to go, so automatically switches to none for by default. That's $30-20 is in a divergence. The strength is not going down. Let's see. Divergence failed. Now look, bottom of the bar, shot up after divergence. Beautiful trade. Didn't take any, but ट्रम्प ने टैरिफ 245% कर दी. My God, man. Trump for China, 245%. क्या किया जी? अच्छा, बंदा भेजा है.
पता नहीं मेरी कौन सी ट्रेड पिक हो गई। चलो मेरे प्रॉफिट मुझे $100 में निकाल दिया इसने, मैं अपने प्रॉफिट ट्रेड लेके ना, तो पता नहीं चला क्या हुआ क्या। छोड़ कुमार बोली तो उस पे गोल्ड पे बट ये तो गोल्ड पे ना, कौन सी बात वो चली गई होती। शॉर्ट तो ऐसे हो जाती है जैसे बिजली भरी होती है। पैनिक सेलिंग फॉरन। So gold almost around 30 पॉइंट नीचे है। $30 $30 तो $3000 की मूव आई है 100 में। अभी फिर वापस ऊपर जाने लगी और उसके गोल्ड पे भी SRES की ट्रेड आई है 30-20 में, क्या बढ़िया लिया आपने? हाँ मैंने ली थी, उसमें प्रॉफिट लेके बाहर मैम। क्या मैं आज सिम पे कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल आई डिड टेक। Yeah, it's stuck around 21, very close to opening anyway. Once again coming back towards. Yes, one.
मेरे क्या भी बोला चार्जर में वायर में क्या मिड बैंड almost S1. Let's see. Close to S1. This is the closest we got so far. Both markets about to touch S1. Comparatively, काफी slow है ना? है नहीं? Comparatively, हाँ सर, नॉर्मल है, शुक्र है, नॉर्मल है। ये होना चाहिए। वो पिछले हफ्ते जो हुआ ना, वो अब पता कब होगा? 80 दिनों बाद। फिर उसने टैरिफ खोल लेने हैं। वो नहीं, फिर उसने वो कोई ये 4 साल हमारी जिंदगी में ऐसा ही रहेगा। आज कुछ बॉटम ऑफ द बार नजर आ रहे हैं, कुछ थोड़ा हाँ, और 15-10 भी चल रहा है, तो ये होना चाहिए। वो होता ही है कि अभी भी चाइना पे 250% टैरिफ लगा हुआ है, तो वो और उधर एनवीडिया को उन्होंने कोर्ट में ले गए कि चाइना में कुछ शिप नहीं है। गली मोहल्लों की लड़ाई जो होती थी ना दोस्तों की, वो कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स की तरह चल रही है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं फील हो रहा कि कोई गली मोहल्ले में लड़ रहा है या हाँ, तो मैं मारूंगा, ये मेरा दोस्त है, तुम्हारे साथ नहीं। ओह मैन, तो शुक्र है आज थोड़ा नजर आ रहा है कि चार्ट चल रहे हैं, वरना मेरी बट उंगली तो सेल मार्केट पे होती थी, क्योंकि वो कहीं पर भी गिरा देगा ना। उस दिन मैंने सेल मार्केट किया एक्सट्रीम हाई से, जिस दिन इसने पंप एंड डंप किया ना, अपने दोस्तों को कह दिया कि खरीद लो। हम लोग एक्सट्रीम हाई पे बैठे थे, वहां से 1000 पॉइंट चढ़ गई। तो इसका स्पेशली जब ये अभी उठेगा थोड़ी देर बाद शायद, जब भी, तो दुनिया को आज क्या देता है। और
एरिया ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ S2 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਪਾਈਕ ਪਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸਡੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ S1 ਦਾ सिर्फ S2 S3 R2 R3 क्योंकि वो की पता है कितने पॉइंट दे गए ऑलमोस्ट 30 पॉइंट दे गए S1 से ठीक है वेरी गुड अब वो दोबारा टेस्ट यहां से गई है 7 से अब सर दोबारा S1 ना लीजिएगा क्योंकि ठीक है आपने एरिया लिया लेकिन स्टॉप लॉस लगाया था ना गुड दैट्स व्हाट मैटर्स ये वैल्यू एरियाज हैं नहीं ये वैल्यू एरिया डबल क्लिक करें तो वो आपको बता देती है कि किसकी लाइन है ये डबल उस पर इंडिकेटर पे चले जाएगी लेकिन मैं इसके वैल्यू एरिया नहीं देखता ये तो हरी हुई है मैंने तो सर आज आपकी थ्योरी टेस्ट करते हैं कि जब 30-20 टर्न होगा ना लेकिन प्रॉब्लम ये है वो टर्निंग में बहुत पॉइंट निकल जाते हैं लेट हो जाता है लेकिन लंबा जाता है हाँ मैं चले देखें अभी तो ये डाइवर्जेंस कर रहे हैं सो सम थिंग्स वी एक्चुअली हाशमी साहब भी यही करते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट एरिया नहीं लेते ठीक है अगेंस्ट द ट्रेंड आ रहा है ना तो अब वो क्या कर रहे हैं अभी एरिया दोबारा टच हो रहा है जब तक 30-20 ग्रीन होगा ना फिर बॉटम ऑफ द बार से शुरू करेंगे पर नहीं अब चलो बाय बिड कर दो या सेल बिड हाँ मार्केट जरा आपको बहुत एक आध टिक का फर्क दे देती है but buy ask sell ask is better than but we are back into the area for both S1 inside Nasdaq and ES Nasdaq.
आ गया थैंक यू Nasdaq निचले एरिया पे लगा रही है 320, 323, 2019. यहाँ से उठी ठीक है 530 तो 5302 से और ये क्या मानता है 530.8 ले रहे थे ये कौन सी ट्रेड होगी मैंने तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की देखिए इस पे कौन सी ट्रेड होती है बॉटम रेंज दोबारा Nasdaq टेस्ट कर रही है. Nasdaq S1 broken. Let's see. सारे टेस्ट कर लिए 65 का चार्ज लेता है चल जाएगा
खूब आगे जा रहा नीचे। हाँ, आपका ट्रेंड चेंज हो गया वैसे। तो आपने ले ली। तो ओके, इसमें लेट्स सी, bottom of the bar would have preferred more. नहीं नहीं, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कोई आपका और मसला चल रहा है, ये तो आप ट्रेड कहाँ से डाल रहे हैं? मैं तो सेल पे लिया था, टॉप ऑफ द बार लिया, सपोज टू बी इन प्रॉफिट, वो नीचे गया वो सारा, लेकिन वो तब भी नेगेटिव दिखा रहा है। नहीं, पोजीशन में जाएं, अभी सिम पे ट्रेड डालें। सिम पे ही कर रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी डालें ना, अभी आप लॉन्ग की ट्रेड डालें सिम पे। मेरी एंट्री सर ਇੱਥੇ होएगी, बॉटम ऑफ द बार, क्योंकि अगर वो मोमेंटम नहीं लेके गया ना तो ਇੱਥੇ अगर मेरा 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होएगा, क्योंकि वो चलदी कैंडल ਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं सिर्फ ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन कर रहा ਸੀ कि सेफ एंट्री है बनती है। ठीक है, ट्रेंड ग्रीन हो गया, नो प्रॉब्लम, एरिया भी है, लेकिन हुन देखो ना रिवर्स चला गया। डिस्कनेक्ट कर रहा है फिर भी चल रहा है। नहीं, देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका निंजा में कोई मसला आ रहा है, उनकी इसको बंद करते हैं, एक दफा दोबारा खोलिएगा, अभी लगाए। अब यहां पर ट्रू SRES बन गया है, यहां से अब जो ग्रीन होगा ना उसके बॉटम ऑफ द बार से सेफेस्ट ट्रेड बनता है, क्योंकि अभी तक तो वो नीचे ही है। क्योंकि यहां से अब ग्रीन हो, ब्लैक कैंडल नहीं मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी ब्लैक कैंडल बने फिर बॉटम ऑफ द बार आए, देखिए वो डबल बॉटम लग गया। अभी ट्रेंड ऊपर का नैस्डैक का नहीं मूड बन रहा, 277, 76, 74, नैस्डैक नहीं रुक रही ना।
265 नास्डैक पुल बैक करेगी तो यस ने ऊपर जाना है. Around 10:45 they should pull it up. 10:45 to 11, the new reversal zone. आप MN क्यों कर रहे हैं 15:10 में सर यार? नहीं खोल लोगे. नहीं वो देखना ही मुश्किल है 15:10 में इसको. वैसे ही है. नहीं आप बैठे, मैं उधर आता हूँ. MN क्यों 15:10 में आपके चार्ट्स ही नहीं चलेंगे. इसको अगर देख 30-20 फोटो करता हूं. नहीं वो ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं इसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ. इसको कर रहा हूँ डिस्कनेक्ट और इसको चेंज कर रहा हूँ MES में. अब चलाते हैं. हाँ मैं लेट्स से अकाउंट लेता हूँ सिम और करता हूँ यहाँ पे भी सिम करना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ किया बाय बिड, ये MES है. अब ग्रीन है क्योंकि प्राइस डाइवर्जेंस लगी हुई है, ऊपर जाएगी तो ये अब ये नैस्डैक चल रहा है. तो अब अभी सही बिहेव कर रहा है क्योंकि मैंने लॉन्ग किया हुआ है और प्राइस नीचे जा रही है. तो अभी इसको मॉनिटर करते हैं. कौन सा अकाउंट सर डिपेंड करता है आपका कौन सा. इसमें टारगेट है 3000 का, इसमें टारगेट है 2000 का, इसमें टारगेट है 1000 का. ये प्राइसेस नहीं है, इसकी 25% ऑफ. आप बताइए कौन सा लूँ जो आपको इजी लगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ किसी में मंथली फीस नहीं है उसके ऊपर. सस्ते वाला ले लेते हैं. हाँ मिडिल वाला ले लें, ये ज्यादा. एनी डस्ट टाइम मैं कर देता हूँ आपको सर. लेकिन सही जा रहा है, चढ़ गई प्राइस. ठीक है, लॉन्ग में किया तो पैसे बन रहे हैं ना, ऊपर गए हैं. आप पॉजिटिव में निकले ना? हाँ नहीं, मैं उधर नेगेटिव में निकल गया. ओके ठीक है. जी नास्डैक गई थी एज लो एज 260 तक. पर अपनी गल सुन ली अन्ना ने, बाकी चले. नहीं वो एंट्री
ठीक है, लेट्स से कि 10 वारी करोगे ना 7 वारी चलेगी, 6 वारी। मेरा 9 आउट ऑफ 10 ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਐਸਆਰਈ ਐਸਟ ਅਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। अब नीचे से आ रही, इसने एक्ट किया एज ए रेजिस्टेंस स्टिल। S1 के 5285 middle of the ये फर्स्ट ग्रीन आई ऑलवेज फाइंड इट रिस्क। सेकंड ग्रीन आया सी ना, पहला ग्रीन छोटा सीगा, उन्हें लोअर हाई बनाया, हायर हाई नहीं, पर इट्स नो प्रॉब्लम। हाँ तो एक बात है तो 11 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे। ऐसे ही अब शुरू करेंगे बात। अभी आ जाएंगे कॉल हाँ कर सकते हैं। Nasdaq 261
मैं you want to go. Okay. Index number हाँ, any just thing. 1000. एक second. 1000 589. एक्सेप्ट करेगी. हेलो जी सर. हाँ जी, गुड हो गया. अच्छा, वेरी गुड यार. हाँ हाँ, 1900. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वो दे देंगे, वो भी क्यों चला जाएगा, दे देंगे. नो प्रॉब्लम. कंग्रेचुलेशन जी, कंग्रेचुलेशन. नो प्रॉब्लम सर. ओके जी, थैंक यू, थैंक यू. फिर बॉटम ऑफ द बार आया. 2 आए थे इस स्विंग के अंदर. फिर बढ़ते हैं. Two active orders. No working. Simple.
ये पढ़ते हैं। What happened here? No connection. कनेक्शन एकदम क्या है? हाँ मेरा भी इधर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी आज अपनी जाना है। डन कर दो। खुश। नहीं आज टाइपिंग Ninja trader is not responding slowly. मैं ये चेक करूँ भाई ये ऑर्डर कहीं पता नहीं किसके लगा होता है। दो बॉलों पे 2 बार आउट हो गया था लेकिन नो बॉल की अच्छा इसमें 200 हो गया 540 से तो 740 200 तो हो गया 540 है यहाँ पे तो 540 से 740 हो गया ना 740 क्या सोच रहा हूँ क्या मैच हो गया 240 बढ़ गया पीए में आप लोग लूज नहीं कर सकते मनी ये की तरह के 600 800 बन गया बिकॉज थ्रेशोल्ड खराब होगा याद रखिए। हाँ अगर आप लूज नहीं करना एक दफा बन गया तो छोड़ दे। वो मैंने बंद कर दिया कि कल गलती हो गई मैंने बंद कर दिया अब 200 रिकवर कर लिया ठीक है 10 के 15 दिन हो जाएगा कोई कम से कम पीए तो फ्लो ना होगा और मैं उसके चक्कर में जो है वो 25,000 नीचे चला गया। हॉट मेरे भी नहीं शो कर रहा रियल अकाउंट्स शो कर रहा ना सिर्फ सिम शो कर फिर हॉटस्पॉट पे फिर चक्कर आ जाओ मतलब मेरे को सिर्फ ये टेंशन है कि यहाँ तो नहीं है ट्रेडो वेट में चेक कर लें वो मैंने सारी एक वो फिर ठीक है ट्रेडो वेट में नजर आ रहा है तो निंजा में हॉटस्पॉट अच्छा किसी से अगर सिम पे ट्रेड लगी रहता है तो उससे फर्क पड़ता है नहीं सिम का कोई मसला नहीं जो रियल अकाउंट तो रियल में अगर मतलब कि यहाँ पर नहीं भी दिख रहा तो ट्रेडो वेट से सारा वो एग्जिट दबा ले एक बार करेक्ट और कोई ऑर्डर लगा भी होगा चाहे किसी भी मार्केट में लगा सब सारे कैंसिल हो जाएंगे राइट थिंक अबाउट इट फोन नंबर भरता सर अपना हाँ जी फोन लिखते हैं मेरा भी नहीं शो कर रहा अकाउंट ही नहीं शो हो रहा डाउ इनको खींच के लेके आ रही है एक्सपेक्टेड लो तो आंसर एसएमएस आएगा
वो पा दिया। गोल्ड पे चला 2-3 बार बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। गोल्ड जरा स्मूथ है, दे दे मतलब देखिएगा मेरे को 2 उसमें $100 निकाल गया वो। हो गया। सर बैंक को कॉल कर ले, मेरा ख्याल है वो उनको एक्टिविटी सस्पिशियस लगी है तो उनको चेक कर लेंगे। दूसरा लगा देना। Okay, Rahul bhai, have a good weekend. Enjoy with your family. Thank you. See you on Tuesday. Yes, see you on Tuesday. Monday को तो मैं भी नहीं रहा लगता है, और ये माँ जी साहब ताने ना के बराबर चल रही होगी। चलो। सर कोई ट्रेड नहीं, OS1 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर रही है। अगर मार्केट बाउंस करे तो देखा, क्योंकि डाउ बहुत थले आ गई, एक्सपेक्टेड लो की तरफ जा रही है सारे बस। नहीं इधर मैं 18,124 का वेट कर रहा हूँ। लो जी 11 बजे वाली कैंडल खुल गई है, होपफुली विल टेक इट टू समवेयर। हो गया। नहीं सर ये भी हाँ, फिर आप मेरे ख्याल है चेक कर ले बैंक के साथ, मेरे ख्याल है सिक्योरिटी की वजह से वो दे रहे हैं।
My first name is Kamaljeet, Kamaljeet. Last name is Sandra, Sangra. After that, I was trying to use the account for the payment to Poldia. It is not going through. It's TD Visa card. Yeah. 4724 0909 4825 9344. Sir? Okay. S1 हो चुका है, S1 हो चुका है सब। मैं आप लिख रहे थे ना नंबर, मैंने कहा बताऊं, S1 हो चुका है। गलती जानते हो मैं 5 माइक्रो लॉन्ग कर गया सी, गलती ना, गलती अच्छी हो गई। Hi sir, this is Kamaljeet Sangra. Good sir. Good. After sir, I was trying to use my card for payment to Poldia, but I am not going to. It's 4724
असल में मैंने 11 बजे वाली कैंडल देखी, डाउ ने ऊपर की तरफ बनाया है। अगर आप देखें जो अगली 1 आवर की कैंडल खुली ना 11 बजे वाली, तो वो ग्रीन थी, तो क्योंकि डाउ ऊपर आई, नैस्डैक भी ऊपर आई, ईएस भी ऊपर आ गई, आगे सारे ऊपर आ गए, सब के सब। सर 260 नहीं इस वाली भी नहीं, कोई 275 तो ही मुड़े आई, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं गई। ਹੁਣ मैं देखो S1 खत्म हो गई तो ਹੁਣ R1 की तरफ ऑर्डर ले जाने हैं सर। 18,700 Where should I check? What I will try to. Yeah, it was in Asian Food Center. Oh, yeah. Recently, I paid 4,000 something. My last time. On the last date of the last date for the card. Yeah, due date. Okay, everybody. I See you on Tuesday. ठीक है जी। It is in this month only. This month only. Okay. Debit. Different account. Checking account. Yeah, it was from 4 years disability. It was around 1,600 something. चल लिया कोई पढ़ लिया तो हल्का फुल्का 1,600 maybe 99. जिन्ना बंदा वो टारगेट दे नेड़े आ जाता उतना स्लो हो जाता। मैं देखिया मेरे नाल कल बड़े अजीब गल, मैं लीडर आया अपने इवनिंग में आ रहे हैं ना एरिया, सुबह आ ही नहीं रहे यार थे ना। मैं एक में लाया ना लीडर, तो मैं 2 बुल नाक्स ते नाल करदा है, एक लावां ते 5 माइक्रो लग जाते हैं, और समहाउ लीडर ते फेक लीडर है ਉਹਦੇ ਤੇ 5 लग गए और 25 ला देते। और मैं सेकंड पे आउट दे रेडी हां, एकदम 2000 नेगेटिव, क्योंकि 2.5 मिनी लग गया ना, 2.5 मिनी लग गया। मैं क्या यार है तो सेकंड पे आउट गया, मैं एनीवे कट देता क्योंकि 4500 ਸੀਗਾ, 2000 ਦਾ लॉस लिया। आई सेड आई हैव टू कर इट, क्योंकि गलती हो गई ना। नो प्रॉब्लम। विद इन नेक्स्ट 1 आवर मैंने अपॉर्चुनिटी मिली और मैं पहले 500 रिकवर किया, फिर 500। कहने का मकसद है कि मैं ए नहीं वेट किया कि मेरा पूरा अकाउंट ड्रेन हो जाए। आई सेड आई मेड ए मिस्टेक। आई नॉर्मली गो 1 माइक्रो टू 5 माइक्रो, 4500 दे सीगा 4000, वो आया 2000 ते, कोई गल नहीं, 5 माइक्रो करते। अकाउंट ना जान दो प्लीज, पीए अकाउंट आखिरी सांस तक लोग बैठे होते हैं कि यार यहाँ से मार्केट ने चले जाना है, चले कॉन्फिडेंस ही नहीं बन गया कि मैं और प्ले करूं। नहीं सर, वो शूटर मार्केट एकदम वही में संभाल ही नहीं पाया। ऐसा ही है तो एवरी डे। कल पिछला 1 वीक तो ट्रम्प की वजह से ना वो इतना गर्म मार्केट थी, टैरिफ्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो सुबह उठो रोज, हमें नहीं पता, क्योंकि शॉर्ट में गिरती जल्दी है ना। तो अभी तक 10 दिनों में यही हो रहा है। नहीं My card is not working.
हॉटस्पॉट से, हॉटस्पॉट से करेंगे, लेकिन आपका पहले आ रहा था। हाँ, ये जो सारा डिस्कनेक्ट हुए ना, मेरा भी सिर्फ सिम शो कर रहा है, तो आप उसको रिकनेक्ट करें निंजा को हॉटस्पॉट से। Yeah, because gone through. Okay. Okay. So guys, tomorrow office is closed. There is no market. Good Friday, nothing to trade. Saturday, Daniel is doing the class. Sunday, he's doing the class. Monday, he is here. Yeah. Market, so, but I won't be here. Just saying there won't be live stream. मंडे खुली हुई है मार्केट, एरिया भी आएंगे, आपकी ब्रीफ भी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ मैं आपके सामने नहीं होगा। फुल आवर, मंडे फुल आवर है, फ्राइडे बंद है, इक्विटीज पूरी की पूरी। मैं मंडे को नहीं हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं यानी नहीं ब्लू टाउन मैंने कहा जाना है, मेरी दौड़ इतनी तक है बस। नहीं सर, दुबई के लिए 2 हफ्ते चाहिए होते। सो लेकिन आज अभी लैपटॉप होगी पास, कुछ सब कुछ होगा, सो आई कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस। नो नहीं, देखो मेरा सेटअप तो एक मैकबुक है ना, क्योंकि सर्वर मेरे सारे रेंटेड हैं शिकागो में, क्योंकि यहाँ वहाँ बत्ती का मसला नहीं है। देखिए कई दफ़ा इस अनोइंस से ना मैं तंग, मैं एक दफ़ा यहाँ बैठा था, 20 PA लगे हुए थे, मैंने जहाँ लगाया हुआ था ना लाइव ट्रेलिंग, एपेक्स की बात है, वो नैस्डैक आई, 5 माइक्रो उसने प्रॉफिट दिखाया और वहां से गिर गई, और उस वक्त इंटरनेट चला गया था इस मशीन पे। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा रिस्ट्रक्चर किया भाई, तो जैसे इट्स टू अनोइंग, स्पेशली अगर आप लाइव पे खेल रहे हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हॉटस्पॉट लगा के रखे, ट्रेडर बोर्ड खोल के रखे, कहीं से भी ना ये मार्केट कुछ भी हो सकता। जाती है मार्केट के साथ जाती है। अच्छा, अब कोई ना पर्दा भी नहीं है, पहले होता ना कि यार करप्शन हो रही है, ओ यार अब खुल के कह रहे हैं कि ठीक है ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਲੌਕ ਅਪ ਯੂਰ। ਚਲੋ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, $128 ਦੀ 골ਡ ਦੀ ਸਵਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਆਣੀ है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सर ਹੁਣ ਤੇ 700 ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। नहीं ये DUL है, BUL नहीं है, ABDUL। मेरे तो दिमाग च एक चीज पै गई, मैं जदों अपने अकाउंट शो करा ना लोगों को, लिक्विडेट हो जाते। इट्स ओके। हाँ नहीं, कल मेरा गल की नहीं, मैं पहली बारी देखी सी, मैं जड़ी सिर्फ मैं ना नहीं आ जाता होया है कि जदों कन्वर्सेशन हो रही सी ना दी,
या एरिया लेना फर्स्ट अटैम्प्ट, प्राइस आ रही है सब उतों बस जेड़ा 30-20 है ना, फिर SRES का पूरा वेट कर लो कि यार लोअर लो हायर लो, एक बारी चढ़ गया फिर बॉटम ऑफ द बार तो मैं उत्ते जा रहा, क्योंकि उत्थे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। क्योंकि अगर तुम देखो गोल्ड उन्होंने किया ना SRES, आज उन्होंने 200 बनाए ने, वो कहते यार 30-20 एटलीस्ट चलते चलते 4 टिक्स दे रहा है, या 15-10 4 टिक्स दे दिंदा है गोल्ड दे विच। हुण ES की करती है, तुसी बैठोगे उस असी फिर उत्थे दुआ शुरू हो जाती यार 2 पॉइंट मिल जाए। आसान है कि खामोशी नाल अगर ES कर रहे हो तो SRES बढ़न दो, बॉटम ऑफ द बार बाय करो, क्योंकि तुहाडा स्टॉप लॉस सिर्फ 3.5 पॉइंट का है, इस तो छोटा स्टॉप लॉस तो है नहीं है। ते अगर TP तुहाडा 2.5 या 3 का है तो 1-to-1 रेशो चल रही है, तो एनीवे हुण तो निकल गई वापस उत्थे ही आ गए जिथे मार्केट है। R1 PP है कितने कितना दूर है? एक सेकंड हाँ सर ठीक है। PP भी पता क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि पिछले वीक का लो उत्थे ही है। ठीक है चलो लेट्स सी, आइए तो 335 तो वापस आई। देखो 15 बॉटम ऑफ द बार चले, ठीक है, 30-20 बॉटम ऑफ द बार तो उन्हें 2 पॉइंट देते हैं। हाँ, आपने अपने एरिया डालने। हाँ जी, उसमें मैंने वो फाइल भी डाउनलोड कर ली। हाँ, इसमें भी आ गया सुपर एरिया। हाँ नहीं यही यूजर नेम है। हाँ जी, उधर लॉगिन हो रहा है ये सारा वहीं से देख के मैंने कॉपी पेस्ट किया। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें लॉगिन हो रहा है। हाँ, और यहाँ एरिया नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आई रहेंगे, मैं देखने से करा रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। आप नई ईमेल से तो कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना है ना। एक सेकंड, मैंने सिर्फ एक चीज देखनी है आपकी, उसमें आ गए हैं। अब जरा काफी सही चल रही है ये बैटरा लैपटॉप से यार। IBM की थिंकपैड पावरफुल है। मैं HP से परेशान हो गया था बहुत ज्यादा, तभी मैंने चेंज किया। ईमेल नहीं ये देखिए अब आएगी। अच्छा ओके, वो सिर्फ यूजर नेम डाल रहा है। हाँ थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वो टेक प्रॉफिट तो चला ही नहीं, वो उन्होंने भी टीम ने भी करके देख लिया, वो सेम में दिखा रहा है वहाँ पे वो टेक प्रॉफिट का। देखना आप यहाँ पे मैं एक जो ये काम था ना मेरा, this one 100,000 दिखा रहा है। This is हॉटस्पॉट, लेकिन ट्रेडोवेट में नजर आ रहा है। ट्रेडोवेट में लॉगिन करें, उन्होंने वैसे सारा ट्रेडोवेट में आ रहा है। ठीक है, इधर नहीं आ रहा ना, तो इधर जरा हॉटस्पॉट कर ले। इधर हमारा मसला है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ये अगर ट्रेडोवेट में नजर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पेन क्या होता है? स्टॉप लॉस लेना। वो खंजर की तरह अंदर जाता है कि ये ओ माय, लेकिन थोड़ी देर बाद बंदा भूल जाता है कि यार फिर लेकिन मैं सीरियसली लोगों को देखता हूँ बैठे हुए हैं 1100, 1200, 1300, 2000 का अकाउंट है, बैठे ही हुए। जब तक वो कहते हैं या अकाउंट ना मरे या हम नहीं उठेंगे तो अब हो गया, स्टॉप लॉस है ना, ले लो यार, कोई बात नहीं, अकाउंट बच जाएगा। थोड़ी ब्रीद, लाइक मैं हमेशा कहता हूँ बाजू कटवा दो, मरो नहीं यार, एक छोटा सा फिर अकाउंट बढ़ जाएगा यार, कोई बिग डील नहीं है।
पीए को मैं शुरू में ये कहता था बेबी की तरह हैंडल करते हैं, बेबी गिर जाए ना उसको स्लोली ग्रो करना होता है, स्लो होता है। देखा हो मैं आपको नेचुरल इंस्टिंक्ट बताऊं, -500 के बाद ना ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कोई बात नहीं, जान दो यार, क्योंकि 1500 का अकाउंट है, 500 उड़ा हुआ है, आपका माइंड वैसे ही ना नाउमीदी में चला जाता है कि यार देखा जाएगा, कोई गल नहीं, 150 ही ने मैनू जी पिछली मेहनत है ना 8 दिन की, 150 का मसला नहीं है सर, मसला सिर्फ है पहले 8 दिन हो गए, फिर तुसी पीए लिया। मैं अज भी मेरे को ऐसे पीए ने जिहड़ा $110 रह गए सी, एक मेरे कोई गल नहीं ठीक है 110 रह गए सी, 2 माइक्रो पा के करते वो लेडी ओनू आलमोस्ट 1600 ते ले आई। ठीक, देखो पीए की कोई मंथली फीस तो नहीं है ना, एक माइक्रो पा देता 10 ले ले 14 ले ले। हुण अगर तुसी ऐ नहीं होएगा कि तुसी वेस्ट कीते ने ईएस तो ते माइक्रो तो हुण स्लो लेकिन डेड ना होण दिओ यार, ओदी एक वैल्यू है, एटलीस्ट तुहानू लाइफ टाइम डेटा फ्री मिल जाता यार। आपको एक पीए मिला हो, एपेक्स का हो, बुलनॉक्स का हो, आपका हमेशा के लिए निंजा चलेगा, कभी आपके को मंथली फीस नहीं देनी है ना, तो पीए को रिस्पेक्ट से रखें यार, कोई बात नहीं। मुझे हमेशा सिर्फ पेन होती है वापस ये के जाने की, है ना, कि आपको अब वो दोबारा 5 दिन का सफर तो करना है दोबारा, अब वो 5 दिन फिर आप बैठोगे फिर चलोगे तो पीए एक दफा आ जाए, मैं वो पाकिस्तान में कहते हैं सत्तू पी के सो जाओ सो जाओ, कोई गल नहीं यार, देखेंगे। बहुत ज्यादा खारिश हो रही है ट्रेड के 33 दो, एक और ये ले लो, उसमें ट्रेड डालते रहो। पीए को एवेंचुअली अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप पीए को क्योंकि उन्होंने तो आपको कहना ले लो, 20 अकाउंट है 70,000 मिलेगा, वो तो मार्केटिंग, आप पीए फेल कर रहे हो उनको फ्री के पैसे फिर मिलते हैं, 150 चला जाता है। नहीं आप 10 लें 20 लें, उनको परवाह नहीं है। मैक्सिमम वो कहते हैं 10 अकाउंट्स अलाउड हैं मास्टर में, तो आप इकट्ठे पास करें, सेपरेट पास करें, मिल के करें। हाँ जी, और दूसरे स्टेप में उसकी वो नहीं होती, प्राइस नहीं होती। सॉरी लेजेंड्स में बैलेंस नहीं शो हो रहा है, ट्रेडोवेट में आ रहा है हॉटस्पॉट से। मैंने दोनों करके ट्राई कर लिया, यहाँ पर इंटरनेट के काफी इश्यूज हैं, सो हैविंग बिग प्रॉब्लम। हाँ जी, मेरा टेक ओवर में लास्ट दिन रह गए 2 दिन नीचे वाला 600 को बना हुआ है, तो ठीक है सर, आपके पास 30 दिन है, नहीं वो 30 दिन खत्म हो फिर रिन्यू हो जाएगा और रोल ओवर हो जाएगा, या रोल ओवर। नीचे वाला लिमिट के उसमें बना लो, मैं चलेगा रश नहीं, नया लोग तब भी वो भी चले जाएंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली। पैसे लगेंगे। फिर नीचे आ गए जी, सब लेजेंड्स के सारे अकाउंट यूज करते हैं। मैं एक एक करके मैं आपको पहले पर्डिया एक्सप्लेन करूंगा कि आपने पर्डिया में करना क्या है। ये आपका अकाउंट रेडी है, हम अभी आपके सर ये रेडी टू गो है, इसमें स्टेज 2 नहीं है, ये बस रेडी है। आजकल तो लड़के एक पीए लेके सीधा पर्डिया में जा रहे हैं, एक पे आउट आ जाए 1500 का आएगा ना, वो उठाया 550 का पर्डिया ले लिया, मीनिंग के सर गल नहीं हुई, मैं लगता है जिदे गल मैं तो जो मैसेज नहीं भेजदा ना
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। So he says, no. What happens is then I don't want my account to be shown. It's okay. Like it's. Exactly. So it's all about how you perceive, right? So. Okay. दोबारा? What is Dow doing? Dow, no, didn't come down as much. चल निंजा खोलना। नहीं निंजा का लॉगिन करें, निंजा का अपने हॉटस्पॉट से या जिधर से भी। Sorry, just going to do this. And then it shot back up. ये अभी पुराना चल रहा है या अभी शूट हुआ है? ये क्या हुआ? Oh, बड़ी बड़ी स्विंग्स आ रही हैं भाई। वो उठ गया लगता है ट्रम्प। See you next week. Take care, Ji. Have a good weekend and enjoy. Okay. So this is my 1,000 days of futures trading. I'll give you full beginning and funded trading about 2 years. And this is a new concept. So I want to give you some perspective on prices. What makes sense, what doesn't make sense. Like a lot of people say, what should I buy? 50,000, 25,000, 100,000, 150,000. Now you have to, let's compare some stuff before I come to per diem. Evaluation accounts are for testing purposes. They are called stage 1, evaluation, apprentice, all of these. Now, if I look at some prices,
let's do Legends, $50, an average. I'm not doing 33, I'm not doing 65, $50 is an EA. You have Apex, approximately $40. You have Bullnox, again, we'll put it in the range of about $35. And the last one we do is Take Profit. I'll do it slightly different. Take Profit is stage 1, 105. Now, what does mathematically make sense? I'm comparing 25,000 account. When you go into a PA account, Legends is asking for 150, Apex is asking for 130, Bullnox is asking for 150, and if Take Profit is not asking for anything right now. So you look at what is your math. So now Legends, let's do Legends. You need to do this in 5 days. You need at least 5 days of trading. Apex wants you to do in 1 day. Bullnox can do this in 1 day. Take Profit says do this in 5 days. So this is the routine. Now, if you manage to go through 50 plus 150, you're approximately $200 to get a PA. Here, again, around 175, let's put it this way. Same, I will do approximately 175, and if you manage to get it, it's 105. So if you crossed 2 stages in these 4 companies, you're looking, what is the capital? Capital means that you will get $1,500 of an account. So you're getting $1,500 for what cost $200. So if you were to open an account with the GFF, with AMP, $1,500 will cost you $1,500. The ratio is 1-to-1. Here, let's suppose you blow 10 Legends. I'm just saying an example. That's $500. $500 you have blown. And if you blew 2 PAs, that's about 300. So you are spending $800 to get $1,500, right? Approximately. But this is a, like I would say, day one, you were born, you want to get into trading, you do Legends. Hamare paas, before that, we didn't have these options. Longest year, we ran with Apex alone because they were the only ones. New companies came. Because we have other companies, they don't either support Ninja. I can start listing 10 more. 2 stages company. I'll give you Top Step. I will give you My Funded Future. They have a big problem. They use something called daily loss limit. So, and Legends used to have this, and Take Profits used to have this problem. What does that mean? You have $1,500 in your stage 1. If you lost $500, your account is gone. You know how many people just do an average on 500? कि यार एक 500 minus से एक average और कर लेते हैं. So there are many companies, if you read online, if you see something called they have a daily loss limit, some like it, that at their account is, you know, they have a more habit that they're not going to let the account drain. But those who do dollar cost average, यार एक इधर लिया एक नीचे लिया, उनके लिए ये ठीक नहीं. So just watch out for any accounts that have daily loss limit. Personally, I don't like it. Some users like it, some don't. But my top 4 companies are Legends, Apex, Bullnox, and right now I'm preferring, if you know how to put a trade in, go with Take Profit. Close your eyes, go with Take Profit. Spend 105 because there is no PA. You can buy 5 accounts. So this is how it's done. Now, this is 1 day pass through? This is 5-day pass. Take Profit. हमारे banner लगा हुआ है. So यहाँ लिख देते हैं pass. ठीक है. So now today, this video will get recorded so everybody has an idea. So if you spend today $33, Apex same as 30, it's 80% off. But this is round 1. You need 5 days to pass. You need 1 day to pass. You can pass it in 1 day. You Take Profit. You have to pass it in 5 days. All 4 companies, completely different scenarios. I'll give you one example. Let's look at Legends. What does Legends say? Legends says, don't make more than $450, right?
Apex and Bullnox has no issues at all, right? But Take Profit says because they have 5 days, you cannot make more than 750, 50% of the money of your target. So this is how does this is drive? This is 30% of target, and this is 50% of target. So they said you can make in Take Profit, you can do this in 5 days, and you can do this in 750. I'll come to per dia later. Why it's important, so I'm building the momentum towards that. So you take Legends, you do pass in 5 days, you make your pay 150, and now you have a master account. Again, I will stress, please, master accounts has no expiration. You have infinite time here, infinite time here, infinite time here, infinite time here. There's no limit. Now, what do they say in a PA account? What is your Legends target? Legend says make $2,000. Then we will give you money. Legend Apex says make $3,000. Then we will give you some money in the PA round. Bullnox says make $3,100. Is it 31 or 41? So 2,600. They will give you 4,100. And Take Profit says make $1,500, and we will give you. Now look at how Take Profit is starting to be at most advantaged right now. However, their entry price is most expensive compared to it, but their round twos are easier. So in my opinion, if you were to take this, I would rate this as number 1. I would rate this as number 2, Bullnox, number 3, and at the last, this is my personal favorite. If I was to, you know how to trade, take profit. If you don't want to take profit, go with Bullnox, relaxed rules. And then I would Apex at the last. Other restrictions are in the take profit. So that's what I'm coming one next to. So your target is so your targets are these. Before you get a payout, target. Now, what does Legend tell you? You have $2,000. I want to see 7 days of trading. 10. I think it's 10. So days. Let's put it in 10 days of trading. Apex says 8 days of trading. Okay. Bullnox says 10 days of trading. Watch this. Legend is not 7 days. It says 7 is for EAs. PA, they move it in 10. But Take Profit says 1 day of trading. You know how they're making it even, they said, you want to pass it in 1 day? We don't care. Now, that's why I'm rating it number 1. Could change. Tomorrow, first Apex used to be number 1. Maybe tomorrow a new company comes, changes the rules. I want to go with the most favorable for you based on, if you're an entry person, you don't know how to trade, go with Legends. You're going to fail at $50. I don't want you to fail at $105. Because if you don't know how to trade, don't take profit. You will be losing $100 each time. Here, you will be losing $33 as of today. Now, let's look at how many, is there a minimum? You have to make here minimum 150. Apex, minimum 50. Bullnox, no minimum, 0. You can make, and Take Profit, there's no minimum, 0. Meaning, minimum is before they pay you. So your target, they want to see 10 days where you make at least $150. In Apex, they want to see 8 days before of $50 in your report card before they pay you. Bullnox says, I don't care. You can, I'm not going to give you money before 10 days, but you can make $1 a day, $2 a day, $100 a day, $5. But there's a maximum limit. What is the consistency here? Percentage, I will write. Legend says in this account, 30% is Legend. Apex says 30%. Bullnox says 40%. And this says 100%. So there's no consistency, it should be 0%. What does this mean? This percentage means
Just like you have a percentage of the target, they have a percentage of this target. If you want to get paid $2,000, आपका target है, don't make more than $600 of what is 30% of 2,000? $600. So here's the ratio: 600. Now you have 3,000. That makes it 900. That makes it 40% of 4,100 is 1,250. So let's do 1,250. And then you can make as much. There's no amount of money inside the. So this is dollar figure. So consistency figures. So a lot of people ask me, I have a PA on Legends. I know my target is $2,000. How much I have to make? So now this is the grade. This is 30%. $600, make 600 daily and don't exceed that, please. If you're doing Apex, maybe make $900, don't exceed it. If you're doing bull knocks, make 12, I think आपने 1250 बनाए थे, right? Bull knocks? हाँ. 3,000. नहीं, जो आपका one day, आपने अभी पे आउट नहीं लिया ना, sorry, एक ने लिया, सनी ने लिया, तो 1250. And take profit says, I don't care what you make. Again, take profit अच्छा आ रहा है ना, नजर के उसकी restrictions कम है. All right. These are the rules of. Legend has the limit, like नहीं मैं $50. यहाँ पर EA में कह रहा हूँ ना, तो ये अब यहाँ PA आ गया ना, ये सारा PA चल रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ PA and EA evaluation, PA master. So once you have it, these are your kind of rules for these top 4 companies, that if you are gonna do it this way, take profit, bull knocks, Apex, Legends, then you have this PA targets. So if you're doing Apex, before you see any money, your account balance has to have $3,000. So $28,000, they will give you money. If you want to see any money from Legends, you gotta see $27,000 in your account. The $2,000 you have to make. But no time, infinite time. I gotta write time header here. Time header is infinite. Infinite. But they will not pay you. Now, where the story becomes very exciting is this company. I will have to do this at 12:30 again. Don't worry if somebody missed. I have to do exclusively for somebody who's doing take profit. Right here, take profit. What's the big difference? Why do I like them? They said, once you make $1,500 in your PA, you can request daily money. You know, with Apex, you have to trade. I got Legends payout, I got Apex payout, I got Bull Knocks payout as from my. 1500 ले भी सकते हैं? हाँ जी. नहीं, इसमें नहीं ले सकते. Buffer per dia की तरह रखना. So you made 27,000. You're very happy. So this is what I did. So I will put Rafe and I will put Legends, because this is, and I will put my Bull Knocks, and I will put my Apex. This is how my payouts came. Legends, I made $3,300. So my account balance went from 25,000 to 28,300. This was what I did in my Legends. My Bull Knocks, I went from 50,000 to 55,000. So I made 5,000 in this account. Unlimited time. There's no time. You can't do before it, but 30 days, 20 days, 40 days. Apex, I made $3,000. So 53,000. So I turned my 25,000 into 28,000. And this, I turned my 50,000 into my, I requested a payout of Legends. I said, give me $1,500. No problem. I'm less, what, $1,800? The 1800 बच गया ना अकाउंट में. उन्हें लाइव थ्रेशोल्ड नहीं है था. नहीं, लाइव थ्रेशोल्ड तो 15 से के बाद खत्म हो गया था सारों का ही. Oh, so your target and live threshold stops right here at this number. The moment you reach your target, your live threshold stops. Out of Bull Knocks, they gave me $1,500, and I was left with 35.
1800. Out of Apex of 3,000, I got $1,500. I'm left with $1,500. This is how now here's the problem. The problem is when I want to go to round 2, I want to get more payout. I have $1,800 in my account. In order to get the second payout, I have to run this exercise again. Now I have to start making another 10 days of work. So Legends, 10 days of work. Bullknox, 10 days of work. Apex, 8 days of work. So now I have to repeat myself for another payout. My account is active. I have $1,800 in this account. I have $3,500 in this account. I have $1,500 in this account. So I'm left with some money that I can trade again. I don't have to pay a PFE. It's you can keep recycling it as long as your account is not dead. So round 1, round 2, this is my personal report cards. I posted. Now I have $1,800. Then I build up again. I make another $2,000. And then I can request another $1,500 back. Here, again, I have to make another $1,500. This time, $2,500 I have to make. So again, I can recycle my accounts over. But every time I'm in stage number 2, after my payout, I have to do the work again. I have to now wait 10 more days, 8 more days, 10 more days. Why do I like this take profit? I got to my target. So my $25,000 account went to $26,500. Actually, it's $26,600. I made $1,600. Any money I make, every day I can withdraw. There's no 8 days of trading. If I get lucky and I get $200, I can withdraw 200. If I get lucky and make $1,000, I can withdraw 1,000. So anything above this number, you can withdraw daily. Now, this company is causing a lot of headache to this. It's business, right? End of the day, people are joining, take profit. They're dumping. They're like, hey, too many rules. Less rules, the better. Then another company. Now, all of these companies, Legends and Bullknox में master research करते हैं? नहीं. Legends and take profit. Both of these, if you fail the master account. So you spent $50 and then you spent $150. You spent $200. आपका मास्टर चला गया, उनका मास्टर चला गया सिर्फ 4.30 का ट्रेड खुला छोड़ने से. गलत ट्रेड नहीं डाला था. So if you lose a master on Legends and take profit, they offer something called a $450 reset. 450. No problem. No problem. Absolutely. I'll restart it if you don't mind. You have some time, right? Yeah. Okay. Because I have to redo this whole session at 12:30. Okay. So you can kind of catch me in the middle here. So these two companies, Legends and Take Profit, offer something called a reset. आपको ईमेल आती है, आप 450 हमें दें, हम आपको रीसेट कर देते हैं, आप वापस पीए में आ जाएंगे. पीए से स्टार्ट करेंगे. नहीं, आपको एक्सपेडाइट कर देंगे ना. मैं नहीं करना है, नहीं करना. मैं कह रहा हूं नहीं करना. वो आपको ट्रैप करते हैं. देखिए अकाउंट कितने का है? 50 plus 150, $200. They said, people are anxious. I want to go back in. So you go to Wonderland, you see Express line, Speed Pass. Some people have paid triple to skip the line. So the real account is 200. So they said, pay us 250 more, get back into a PA, right? I don't like this price. If this number was maybe $300, it's a reasonable number to get back in line. You're paying 100 more. To pay double the price, almost 2.5 times the price to go back into a PA, it doesn't make sense. You know why?
For $485, you can get a per dia. If you were going to spend $450, might as well $485 and go to per dia. So there is a company called Per Dia Capital. So they have one stage exam. They don't have an exam. They have the least amount of rules out of all of these companies because it's an expensive account. It starts at $485. A good account starts, but they say, you know what? Skip this line of EAPA. Just come to us and we will give you a live account. So how much do they cost? So coming back to now I will come to the point of, हाँ जी सर ये सब रिकॉर्ड हो गए, इसकी फोटो ले लें, लेकिन ये सब YouTube पे everything got recorded and I will answer questions if anybody has it. I mean 30 seconds. Now I don't know. The conversation led up to per dia needed this. I can't explain unless you have the foundation treatment. All right, so let me quickly explain. So take profit is $105 105 का है, हाँ. और $105 for the match. No, वो ये कह रहे हैं कि 105 दे दें और 30 डेज के अंदर कर लिया तो मुफ्त है, वो पीए की फीस नहीं ले रहे, उन्होंने प्रमोशन लगाई है क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने फेल तो करना ही है। वो ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं 97% लोग फेल कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे 105 पकड़ लें, जिसने फेल 33 का करना है उसने 105 भी कर जाना है, तो वो कहते हैं हम 105 पकड़ें, थोड़ी सी वो देंगे फिर देखें, लेकिन यहाँ 33 पकड़ रहे हैं ना, उन्होंने कहा इनको लालच दो कि पीए की फीस नहीं है, लेकिन 105 पकड़ लो। कितने पास होते हैं हमें नहीं पता ना, जो फेल करेगा वो 33 फेल करेगा, उन्होंने कहा 3 गुना पैसे पकड़ लो, सिर्फ 3। हाँ नहीं ये तो रीसेट तो होंदा ही नहीं है, नहीं जेडे चार्ज करांगे ना, नहीं ओ पीए ते रीसेट नहीं वो एदा मंथली चार्ज है, एदा मंथली चार्ज है। लेट्स से 1500 बनाना सीगा, हाँ जी 1250 बने हुए हैं ओ लेकिन फिर पीए दी फीस नहीं है ना, 30 दिन दे अंदर फिनिश करना है। 30 दिन हो गए, हाँ 30 दिन हो गए, हाँ और दोबारा चार्ज देते। हाँ जी फिर 150 दोगे ओदी फीस, नहीं 105 ही है ना, नहीं देखो, so the rule is if you don't finish this in 30 days you will have to pay 150. okay. So you go roll over, so they are trying to push you to trade more. Trade more means 150 ही है, yes, अगर किसी $50 बंदी रह गया so roll over होएगा, so you will pay 105 again, 105 105 ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ, ठीक है 30 डेज हो गए, ठीक है ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ 1450, ठीक, yes ਉਹਨੇ ਫਿਰ 150 ਚਾर्ज हो गए, नहीं 150 चार्ज हुई क्योंकि ये पास नहीं होया, पास तो बाद चार्ज होंगे ना, नहीं टेक प्रॉफिट का तो ये भी इंक्लूड है ना, नहीं उन्होंने कंडीशंस बड़ी सख्त रखी है। कंडीशन इज यू मस्ट पास नहीं होया, हाँ देखो मैं एक सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो इज 30 days and they said no reset, okay, no reset, number no blown, so
So they are saying they're smart. So in the fine print, they wrote, make sure you don't blow an account. We're not going to give you a free PA. Make sure you pass it in 30 days or we're not going to give you a PA. Make sure you don't reset an EA. We're not going to give you a PA. So his question was, somebody made $14.50 and month starts again. They have to pay first time 105, second time 105, then 150 because that's a PFE. So this only applies if you're able to complete it in 30 days. I have people who bought the $5,000 target. I said, impossible. You're going to make $9,000 in 1 month to be. So now they played aggressively, blew the account, right? So this is a trap if you only see it. But it's a good thing if you're able to trade normally. You can pass it in 30 days. You don't have to pay the fee. Right? So you have to make sure you know what you're doing before you start going into take profit. Zero to start. नहीं अगर तो रोल ओवर हो गया तो 105 देगा ना दोबारा देखो ओके ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸੋ 1450 1200 ਲਾ ਲਓ 300 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਣ ਮੰਥ ਨੰਬਰ 2 ਆਏਗਾ 105 ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ 1200 ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ सारे रोल ओवर हो जाते हैं. If you don't have legends, if you pay $50, like yesterday he bought an account for $50, right? I told them he needs to finish it in 30 days. If he goes on 30, but he, you know what happened? He had to travel somewhere, but in 1 month he made $600. He's like, you know what? I don't want to lose this effort. Another $50 will get charged and it gets rolled over. So all evaluation, but it's a negative too, because some people forget and they're like, I only have $30 left in my EA of failing. Okay? I say if you cannot pass it, blow it. Because then at least when it gets renewed, you have a fresh balance. Because some people have a negative balance of only $30 left in the EA. It gets rolled over and they don't get a new balance. So you have to make sure either pass it or check your threshold, how much you have available, right? So swings are badi. So हाँ जी हाँ जी ठीक है नहीं सर 150 देने पड़े उन्होंने फड़ लिया ना तो 300 उन्होंने क्या इधरों भी फड़ो से इधरों भी फड़ो अगर कोई 360 तक आ गया नहीं ऐसा मतलब 105 की नहीं बने मंथ की तो छड़ दो सर फायदा कोई नहीं ना फिर दोबारा पा ले लो 105 का नो प्रॉब्लम अच्छा अगर 119 रहेगा भी 3000 वाला 3000 119 तो उधर 3000 उधर every all the which P include. Now I'll come to the company that you just bought. Okay, if you don't mind, can I just backtrack for 5 minutes to include him? Okay sir. सर आपके लिए मैं आपका Ninja 7 होगा पुराने आप वेटरन मेंबर्स है ना अब मुझे अपनी कैसेट वो पीछे ले जानी है वो कैसेट मेरी चलती है विल लाइफ टाइम में 18 साल से राइट 18 years since this institute approximately 3.5 years ago I joined and then I was on Ninja 7 issue with Ninja 7 was you had to put your own money you did 2 weeks of sim and then say it's great if you know how to trade but here's the big problem a lot of new users who came in they have no idea what a buy stop is buy limit is sell stop is sell limit is chart trader ES Nasdaq and in 4 classes they took the course it's a great course it's a great software but they just don't know where to click only thing was where to buy where to sell ES Nasdaq they don't know the lot size so majority of the 7 users the business plan says at least put $2,500 into the account. So everybody rushed to Legend, GFF or AMP, and they put in the money. We all have the stories. We put in 1,000, 2,000, 5,000. Once you lose that money, generally speaking, 90% of the users don't come back into trading for some time. Because what happens, it's real money.
You have to go put in 1,500, 2,000, 1,000, go to CIBC, RBC, Scotia, wire them, they get it. You know, you feel a pinch. So when I joined this thing, I said, what was the atmosphere? When I became partner here, I said, majority of the people want to get into trading. They have no idea how to trade. They have heard about, like my ad goes on the radio, I can teach anybody. They come in with the expectation, software is done in 3 months. They don't know where to click. But what is bottom of the bar, mid-band, or divergence? So in Ninja 7 days, people were putting in 2,000, 5,000, and if they lost it, they generally didn't come back. So Ninja 8 came, and a huge advantage came. So there is a concept called funded accounts. Now this concept has been around for decades. It's not new. But FTMO has been there. So many companies has been giving you exams and challenges. But the big issue was for a decade, they only did CFDs, contract for difference. So FTMO, we gave you a funded account. So many companies give you a funded account cheap. When Ninja Trader 8 came, NT8, a big company came in the picture called Apex, Bullnox, Take Profit, Perdia. They allow, in last 2 years, I've seen an explosion in the thing with different rules every day. So right now, these are the top 4. So what will happen? So if you want to get back into trading, you need Ninja 8. It doesn't work on 7, doesn't work on 6, doesn't work on anything else but 8. You need the Ninja 8.1 from Daniel. That will give you the latest charts, updates. Here's the advantage. Back in the day, you and I, Chart Trader used to cost me $1,000. If you wanted to include Chart Trader, the license key from GFF, $1,000. If you want to enable ATM settings, they would charge you $1,000. Right? So we've been paying for everything on 7. You needed one feature, they would say money. Half of the money, right? But Ninja 8, once you upgrade, they included everything for free. Once you have included. So first thing is first, make sure before you sign up for a funded company, you have Ninja 8. All right, so what you will do is, there are 2 stages, stage 1, stage 2. You will spend $50, sir, and you will get an account for $1,500. So they will open up an account for you. आपकी email मुझे text आया नहीं कल रात. Yes, sorry about that. I tried calling you. नहीं, मेरे को फोन नहीं उठाते. 4 बंदे उस फोन पे लगे होते हैं, मुझे सिर्फ मैसेज कर दिया करें, क्योंकि वो इनकमिंग कॉल नहीं लेता. बता रहा हूँ वैसे ही. So this is your challenge. You will buy Ninja 8. You will get into a funded account called Legends. There is 2 stages for you. So you will spend $50 and then you will need to pass an exam. So what is your target? Make $1,500. That's your target. What is your? नहीं आज उठ गया होगा ना ट्रम्प. So अभी तो वहीं सर ओपनिंग पे खुली हुई है. So swing बड़ी आई होंगी कोई. So 25,000 is your opening balance. It's fake money, nothing real. The good thing about this, opens in less than 5 minutes. You don't have to wait, utility bill, this, that. It's a fake account. Your target is take this money, turn it into this money. Make $1,500. Now, here's the benefit of this. A lot of people who were learning, majority of them were practicing SIM. SIM was great. It has $50,000. And you took a trade with 4 lots and you were excited. You're like, oh man, 2,000 ban gaya, 1,000 ban gaya, 1,500. And then, but real account didn't have 50,000. Real account only had 3,000. And then you played like a sim account and you blew it and then you didn't trade again. So this is natural, what we all felt. And now this is a simulation account. It's not sim, it's not live, it's somewhere in between. You have 30 days to do this target. So what are the rules? Make 1,500, don't lose 1,500, don't do this in 7 days. So 5 or 6 rules. And once you complete this, you go into a stage 2 because they want to test you twice.
They will put the same restrictions, and they want you to second round make $2,000. Once you make it, it's your money. So how much is cost? $50. How much round two cost? $150. So in order to get a capital of $1,500, that's what I was explaining, with 4 companies, Legends approximately $200 will give you $1,500. Apex will give you $175. Bullongs will give you for $175. Take Profit will give it to you for $105. Yes. So in this, do we have a time frame? Like No, within no 30 time. days, So no we time, have to no make time. 2,000, No, sir. 10 days. Yeah. So now I'll fast forward you to what I wrote above. Right? Because on this thing, No. सर उनकी 5 days. मैं वो स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का नहीं है, स्टेज 1 का है. स्टेज 1 में मैंने ये लिखा. So stage 1, you spend $50. Yes. You cannot complete this before 5 days. So what exactly it means? Before Meaning, 5 days? okay, Because if you- today I made it like $300. ठीक है. Okay, let's do it this way. I want you to imagine it so I want to explain it in depth so you understand 100%. Yesterday I showed you trade of it like this, right? Yes. I said 26,500, that number, and make sure this is not 0. It can, right? 30. Okay, so yesterday was April 16. April 16, May 15th, I said they will charge you another 50. Now you have calendar 30 days, but you have business 20 days because 10 days of holidays and everything. So you have really 20 days of trading. What they are saying is, I don't want you to complete this test before 5. So if you took, like, say you said, all right, April 17, I took it $300 straight. They didn't give you any money. Your threshold was full. That's day number 1. So let's do 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to actually, you can make as many boxes as you like. Day number 2, you traded for what's the number then? Maximum 450. 450. Yes. So next day I traded for 450. Great. 450. They didn't give you a threshold because you are 300, 450. Highly unlikely, but feel good numbers. अच्छा Assume Okay, no, I know. Okay, day 3. day 3 again 450. What? Sorry? 350. 350. No, $400. Great. You're doing exceptionally great. 400. Now let's keep an eye on the total. Yeah. 4, 8, 11. You are almost 1250. You still have to complete 2 more days. You are a very good trader. I'm going to give you 450 on the day number 4. Okay? So 450 you managed to make. I don't know how. I'm still shaking my head, but it's okay. 4, 4, 8, 4, 12, 13 और 3, 16 दिन हो गए. आपका टारगेट कंप्लीट हो गया. They will not pass you. They said you made it too fast. So the idea is now make another $200 maybe on day 5, and then you have qualified. On day 5, you can't just put a $1 trade. They're monitoring you. They're like, this guy is trying to cheat us. They want to see consistency. So my recommendation is don't do it like this. No, I'm just saying. So stick to an average of 150 to 200. If you do this, 150 to 200, even if you do it $100 a day, you can complete this in 15 trading days. You put in a trade, $100, get out. 5 micros or 1 mini, $100, 2 points, get out. 2 points, get out, and lock it, right? I'll show you this study. If somebody wants to, on our website, somebody did a 20 Apex accounts and 7-10 days, $100, $200, $350, and they managed to do it. So this is how you have to finish it. So the bottom line is 5 days we have to
trade. That's the Minimum. Correct. So if fifth day we are But trading, there is no then we limit on the other side. You can trade for a whole month. If somebody trades $100 a day, how many days they need? 15. 15 times 100 is 1500. So this is how you can pass. There is no minimum Amount. or limit of trades that you can. No, you can take crazy amount. Like they don't want you to trade in, out, Right. but just like 10 trades a day, 8 trades a day, things like that would be somewhat reasonable. So this is how the exam works. Then you will go into stage 2. So let's break into so you have done this. 3 things could happen with you. You can pass, you can fail, you can do rollover. Passing is, yes, you follow the restrictions and you manage to get into round 2. Failing is you blew $1,500. They gave you a capital. How much was your risk? $50. How much was their risk? It's zero risk for them. It's fake money. But they got to learn to you, right? So you are practically playing for $50, $1,500. If you took 4 classes of this and opened up a GFF account of 1,500, आपकी नीज शेक करेंगे कि यार रियल पैसे हैं, मैं गलत ट्रेड ना डाल दूं, या तो आप खोले आंखें लो जी ये 50 का डाल दो, ये आप पता नहीं रियल क्यों नहीं ट्रीट करते इसको, but it's okay, EA में जो मर्जी करे. Once you manage to go into, what are the restrictions? 50 for EA, PA costs 150, you have passed, now you don't have a time amount. All of these companies say once you have a round 2, there's no time. You can take your sweet time, 60 days. Aman over there took 63 days to complete his target. 63 days. 50 here, 40 there. I told the man, what's the rush? You don't have an opportunity. Why are you risking it? Unhone to 8 ka hua hai. They have given you 10 days that you can complete your payout as little as 10 days. So when you go into round 2, what is your target? $2,000, right? And they said you cannot complete round 2 before 10 days. okay, here also They have a restriction for 10 days. However, there is no upper time. You know, over here you're working with a month. Here you're not working with anything at all whatsoever. and if same scenario happens in round 2, like before 10 days. Yes, suppose yes. Somebody makes 2,000. So They will not release the payout. So that money doesn't come. No, it's there. Okay. It just won't release. They will only release the money when your account balance goes from 25,000 to 27,000. So they need to see $2,000 in your account before they pay you. Yes. So if I make it, suppose. Okay, but let's do it again, right? Let me put 10 boxes here because I need to really explain it in this term. You have 10 boxes. I'm going to call it 10 trading days. Also, please remember, these are not consecutive. Day 1 was April 17th. Today, you felt a little sick. You didn't do it. It's okay. They don't say consecutive, 1, 2, 3, 4, 5. Same thing here. These 10 days of trading, they're not consecutive. You can put them 2 days apart. Some people don't trade on Friday. They don't like it. Options are expiring. Too much volatility. They said, I'm not trading Fridays. It's okay. So it's just 10 trading days. And trading day starts at 6 p.m., by the way. So if you traded at 6 o'clock and you traded Monday, balance will get combined, added 1 day. So 6 p.m. to on is 1 day. So you are in round number 2. You want to get to 2,000 and you managed to do 2,000. Let's do this way. 300, 300, 300, 300, 300. 5, 15, 300, 300, 300. हो गया जी, आप ज्यादा निकल गए हो, ठीक है? And you say I matched my target. Okay, they're gonna say trade 2 more days before we give you the money. Okay. Of course, you have to trade. Money will be there. So right now, what is it? $2100 आपका बना हुआ है. आप फिर चलो यहाँ डाल दिया 150, यहाँ डाल दिया 300. और यहाँ अगर हम छोटे-छोटे ट्रेड लेते हैं तो
नहीं चार्ट देखें आपने यहाँ तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया, यहाँ क्या हो गया? वो कहते हैं भाई एक बंदे ने मिनिमम वो कहते हैं चार्ट टिक्स तो लो। अगर आपकी कंसिस्टेंट, उन्होंने ना ग्राफ ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना कि दिस गाय इज गोइंग erratic. Even though last 2 days are left, you can't just go हाजिरी लगवाने नहीं जाना, आपने ट्रेड डालना है। बट लाइक नहीं हो जाता है लेकिन उनको भी पता है कि एक बंदा ट्रेड डालने आया या हाजिरी लगाने आया है, फर्क पता लग जाता है कि आपने ट्रेड डाला एक माइक्रो का $1 लेके बाहर आ गए, ओके मेरा जी 8वां दिन कंप्लीट हो जाए, नहीं, डोंट डू दैट. So put in a proper trade, right? So they said, so if you're making $300 across 8 days, put 100 and 100. Nobody will question, but don't put in a $10 trade. Or so I'm just saying, just so to don't try to, because they will just say denied, and then you're like, oh my God, deny ho gaya, kya ho gaya? So just be consistent with your trading. So once you have done this, they will give you. So let's say you did 300 across 10 days. You are very good. So average was 300. Your balance was 3,000. They have given you $1,500. You have 1,500 available. Keep repeating the cycle. Every 10 days, you can make the money. So it's not like you gotta make the money over and over. Yes. So that's real money. That's real money. The stage 2 is 100% real. Because why? This is coming back to my point. Beginners are spending less than 3% here to get a capital. Less than 10% to get a capital. You spend $200, $150. They spend $1,350. So you are investing only 10%. If you lose, imagine if you treat your PA like not 150 but 1,500. तो उनका तो रियल जा रहा है ना, वो तो उन्होंने तो आपको वैल्यूएशन के बाद दिया हुआ है. So please treat the PA accounts as your life depends on it. This is your income. And I will come back in about 5 minutes and I'll explain you. My brother is visiting me from Holland. He works for DHL. He came here. He's like, he took 2 weeks off to come and learn this thing. I told him, if you saw my status, I posted a video in Dutch. That's my brother saying, hey, come to super areas. And he speaks Dutch, right? So I'm like, go and we'll promote you, no problem. So what is his goal? He came in, he's like, I'm making anywhere from 5,000 euros per month. It's a reasonable for a delivery driver for DHL working 5 days a week. 5,000 euros is good number. Like even a UPS driver here makes about $7,000 approximately, right? So he came with a vision. He's like, you know what? I am already making my 5,000 euros per month. I want to make at least 2,000 euros more for side things, like a nice car, a payment, side. He's like, I'm not quitting my day job. I work from 9 a.m. to 6 p.m. I said, perfect timing. Around 9 o'clock, your European session is going to wind down. We will open. You can join us. So when you get home around 6 o'clock, you can join us and you can start trading New York session. He's like, so it makes sense to him time-wise. If you're in UAE, this time is happening at 8 p.m. because 9 a.m. here morning. So he says, great, I can still have my full-time job. And when I log in the evening, I can start to do this. So we put a plan together and I'll show you the plan. I said, all right, what do you want? What are your objective? He's like, you know what? मैंने कहा आपको 10,000 महीने का नहीं बनना, 20,000 नहीं बनना, time लगेगा. So I showed him some examples of somebody who's making 10 grand a month. But it took him 2 years, like to get to that level. Like, so then we made a plan. I said, all right. I said, how much money do you have in your account? He says, you know what? I have around $5,000-6,000 I can do towards trading. I said, open up a GFF account or a Ninja account because he's from Holland. He can open up a broker account with a Ninja directly. So this is the life plan. I sat down with him for 1 hour and we devised the plan.
And I said, all right, your goal is 2,000 to 3,000. By the way, Euro and USD is almost the same. So first thing we did, we opened up a per dia account. आपको per dia पीछे हो जाता है, लेकिन ये important. So he spent $750 and he got a $3,000 account. One time, he got the highest money. Per dia ka account. Per dia ka account. So we need to open a separate account. That's a different account. So because first I have to define what your objectives are. Then I put a plan based on that objective, like a true business plan that, hey, how much you have to make, how much you can lose, this and that, all of that. So this is a one-time payment. So he put in $750 in a per dia account. All right. He wired $5,000 for Ninja and got a $5,000 account. So he sent the wire to Ninja Trader and he opened a live account, GFF, AMP. So he opened a live account. Yesterday, he opened 5 take profit accounts. I'm just saying. So he spent 105 times 5. 525. Okay, so let's write this TPT. This is live account. This is per diem. All right, we are up to how many accounts? 5, 6, 7 accounts, right? Then he opened up. Bullnox came on the sale, and we're like, let's get you 3 accounts. How much were the accounts? $29. 29 times 3. Let's say 35, $100 he spent on. So this was his portfolio. He put a business plan together. He said, all right, let me get you through don't worry about qualifying these. We'll get you through some mentor to make sure you pass them. So I said, on your $5,000 account, you're going to aim for $100 a day. $100 a day on his live account. We dropped it down after discussing back and forth. What is the realistic number can you make? So he bought a copier yesterday. He was all excited. And I said, 50, 50, 50, and 50 times 3, 150, 50 times 5, 250, 50, and 50. I put a target together. You have now 5, 6, 7, 10 accounts. In your possession, you have 10 accounts. For God's sake, don't make more than $50. Like, we kind of refined it back and forth. I said, how much? He's like, I want to pick a condo. This is how much it costs. Let's put a plan. I said, first, swear to God, you will not make more than $50. And he's like, yeah, theek hai. 50 bahut hai. Because what happened here is this 50 adds up to $500. 10 accounts. 10 accounts हैं. रोज का 500. मैंने कहा यार आपने 20 दिन ट्रेड नहीं करना. जब कोई मौका मिले 50 डाल दिए. 2000 बनाने हैं ना. एक दिन में अगर 500 बनता है तो महीने में 10,000 बनेगा. हमने कहा यार हमने 20 दिन ट्रेड नहीं करना. किसी दिन बीमारी आ गई, किसी दिन कोई छुट्टी आ गई. आपने टोटल पूरे महीने में 2000 कमाना है. And he's happy with it, right? So we said, what is your target? So he said, I want to make $2,000 a month minimum. That's reasonable. I put a plan together. Here's the big issue. A lot of people sit in front of it and think, I got to trade. 4 trades, 5 trades, 6 trades, maximum 6 or 7, 50 तो निकल आता है यार. माइक्रो में 50 ना निकले, सॉफ्टवेयर को बेच दें, अनइंस्टॉल कर दें, लैपटॉप कॉस्ट को वापस कर रहे हैं. अगर आपसे 50 नहीं बन रहे ना, तो फिर ये आपके लिए नहीं है. 50 तो बन जाते हैं, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ. मैं इसको 5000 के लाइव अकाउंट में माइक्रो करवा रहा हूँ. सो यस, हाँ जी. So when they do like 10 trades, yes, day 1, yes, so
Are they doing at different times? No. Okay. Same trade, Oh no, just, same trade. replacing No. I'll show you what happened was. I'll show you his report card today. No problem. There's something called the trade copier. He spent $120 yesterday. He's like, अभी तो मेरा खर्चा ही हो जा रहा है, तो कुछ बन नहीं रहा. $120 because the wire hasn't gotten to him because he has to go to Holland to send them the wire. But I'm saying is, when you find an opportunity, you link all the accounts, leader and followers, 1 to 10, or right? If you took it, so I taught him micro gold micro. He says S&P too difficult. He found after 2 weeks, we went back and forth. I'm like, what is the market that you think you can do? So Majid Bhai, I sat him with Majid Bhai in the office, and he says, do gold. So we deleted all of his charts. This is how simplified I went. I said, the guy has no idea how to trade. I put him to Daniel's 5 lectures. He slept in the second lecture. He's like, mujhe nahi samajh aa rahi. So what we ended up doing it, I'm like, I have to help him, right? What can I do to make sure he's successful? I said, all right, what is it that you can do? So we came up with one chart, 30-20. There's no 30-minute, 50-minute divergence. I cleaned it all up. And 30-20, I deleted his instrument because he started to play Nasdaq. And he's like, this is fun. And I said, no, you will destroy all these accounts. Because Nasdaq, you move in $500, you move in $300. So वो नशा चढ़ रहा था कि मैंने कहा जॉब से भी जाएंगे, पैसों से भी जाएंगे, बेगम से भी जाएंगे. This is gambling. So I deleted everything. I deleted instruments. Now if he logs in, only thing he sees is MGC. Only chart he sees is 30-20. And I said to him, when 30-20 goes green, I put in an ATM. $100 loss, $20 profit. 3 or 4 trades, he managed to do it. Because he puts it in, at least, itna to nahi hai na, unko sikha diya yaar. 30-20 goes green, buy limit. 30-20 goes red, buy limit. So when he sees $20 profit in MGC, micro gold, with 2 micro lots, computer automatically closes it. 30-20 goes green. At what place? नहीं, at the bottom of the bar. बॉटम ऑफ द बार से खरीद नहीं वो चलती गाड़ी में भी एक चार्ट गोल्ड में निकल आते हैं. देखिए आप देखिए मैंने उनकी रिक्वायरमेंट कितनी छोटी कर दी यार. $20 एक ट्रेड से निकालना है माइक्रो गोल्ड से. अब गोल्ड कैसे चलता है फिर उसको भी डिफाइन करें. गोल्ड कैसे चलता है? लेट्स से गोल्ड है 3350 का और 3351, दैट्स $10. इफ गोल्ड मूव्स $1, you will make $10. Micro gold, hai na? Or one point if it moves, 1 point. So one tick is $1. So this is $10 per point, and this is $1 per tick. This is how gold moves. S&P moves 4 ticks, $50. Here, 4 ticks means $40. But if you do micros, so 25 cents ka farak hai. So we said how much money you need to make in each trade? $20. That's what the goal is, right? So we said 2 micros and 10 ticks. Gold itna move kar jata hai. Itna bura haal nahi hai कि gold 10 ticks bhi na move kare. Right? So 2 micros, 20. So we put an ATM that if it goes against him, it will kick him out and minus $100. But if it goes in his favor, it will give him $20. And I said, don't put more than 4 trades in a day. So 1 green, 1 red. So 2-3 things truly I'm teaching him. He's not doing every green and red. Higher high, higher low. SRES is confirmed. I will do a bottom of the bar. SRES is confirmed. I will do top of the bar. Because what happened was, to explain a person who has no trading idea, try explaining a magic man's divergence, RSI, Fibonacci boxes. Brain is going overload. And he's like, how can I tell this person how to go slow, but still doable? Right? So I said, all right, we derived the plan with Majid Bhai, and I said, Majid Bhai, teach him gold. I went like, all right, let's clean up everything. Only one chart.
There's no 30-minute charts, support, resistance here. 30 minutes, 30-20 chart. There's no even large triggers there. There's no small triggers. He sees higher high, higher low, lower high. Great. It means trend is about to change. Trend changes to red, top of the bar, sell, take your $20, get out. Now, if I was to ask you, can you not make $20 in one trade with 2 micros? बन जाता है. अगर आप ES ही करें, तो ES move होती है $5. 2 माइक्रो ES से कितना मूव होता है? $20 बने, 4 टिक, 4 आपके $1.5, $2.10, 2 माइक्रो 1 पॉइंट. ठीक है ना? आपको 4 टिक्स चाहिए ये सिनेरियो पूरा करने के लिए. So, and let's hope when he goes back, I'm like, worst thing worse, I even deleted the chart, so he can't really too much mess around to blow the accounts. Only thing I'm only worried about, quantity. Because if he starts to play with adjusting the quantity for even MGC to 10, that's where account is going to start getting blown, right? Because you can do still MGC, still 10, that will make it a one full mini, right? So what I'm trying to say is software is not that complicated. If you make it too complicated, yes, that put a target together. What is my daily target? $50. Now these are, I did not give him even legends. You know, I could have made it 20 Apex, 10 legends, 30 more accounts, and he would have be up to $1,000 a day, because $50 with the 20 accounts is $1,000 a day. I said no. Why? Because in legends, he has to make minimum $150 in order to get a qualification. I said no. Take profit is better for you because there's no minimum. You can make even $10 and be happy, right? So this is the plan I have put together. Hopefully we can achieve that in next. But so at $2,000 a month. So I've broken down like how can you achieve this? And here's the problem. Most people come in, they're trading ES. 400 बन गया, 500 बन गया, नहीं छोड़ रहे ना, या गिर रहा है तो वो भी नहीं, कोई प्लान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा, आ रहे हैं रैंडम ट्रेड कर रहे हैं. रैंडम में हो रहा है कि एक ओ जी मेरा आज ये चला गया, मेरा पीए चला गया, मैंने ये कर लिया. Unless you sit down, trust me, this has taken me at least 2 years, and I used to write. If I take one lot, 2 points, how many would it take? And you can drive down that. And one conclusion is when you are in a PA की बात कर रहा हूं, आप 5 माइक्रो से ज्यादा डालते हैं ना तो गुनाह है आप पे, मैं कहता हूं, क्योंकि होगा ये 1500 का अकाउंट है, 5 माइक्रो, $1,500 अकाउंट, 5 माइक्रो. What's the power of a micro? $5. And you have put in half a mini, which is $25. How much market has to go against you to blow an account, right? So let's take a look. So 1,500 divided by 25. If market moves 60 points, you're done, right? So just do this, please, that in a $1,500 account, don't go ever more than 5 micro. You're going to blow it. Sir, आपको भी कह रहा हूं, आपका पर्डिया है, अभी मैं पर्डिया की तरफ आ रहा हूं. 5 माइक्रो से ज्यादा समझे गुनाह है. होता ये कि आप एक मिनी से जाते हैं, ठीक है? एक मिनी $50 का है. ES 80 पॉइंट मूव हो जाती है 1 सेकंड में आजकल. आप पहले तो ट्रम्प से पहले ES भी $40 नहीं होती थी सर. उससे पहले आए, जिस दिन ES मूव होती थी ना 15 पॉइंट, तो न्यूज छपती थी कि यार आज ES 15 पॉइंट मूव हुई. कल ES 170 पॉइंट मूव हो रही थी एवरेज. सो Nasdaq चली गई है 700 पे. It's good for us. Take a trade in and out so fast, because we know where the mid band is, bottom of the bar is, area is. You can be in and out faster. So what is happening is if you took one mini, $50, and market pushes against you, you're done. Hey, there's no sympathy. I had a guy yesterday. I was on the phone when Powell was speaking. He's like, पाजी शॉर्ट लॉन्ग कर दे. मैंने कहा कर दे. मैं 2.35 पे यहां से लॉन्ग करके गया. मैंने 5 माइक्रो डाले, उन्होंने 1 मिनी डाला, वो गिरती गई. S2 से भी नीचे आई,
मैंने -600 देखा और मैंने उनको कॉल की 4 बजे, मैं कहा मैं 100 से बाहर आ गया। वो कहते मेरा अकाउंट चला गया। फर्क ये था कि उनके 50 में उनकी जान नहीं थी क्योंकि 1500 का अकाउंट था और चला गया, राइट? सो you have to truly measure how much money an account can handle if it slips. 1 micro, you have like 1500 divided by. So look at this. What I said to Perdia, I said his ratio, and I said, "Okay, Perdia, if you are doing more than 3 micro, so this is the ratio I set for him." So I put a leader together. I said, "All right, Perdia, 3 micros, live account, 3 micros, $2,500, 2 micros, and Bull Knox, 3 micros." This is the ratio I gave him for MGCs. That I said, hey, if you're taking maybe 2 to 3 micros is good enough for you to go in and make your $50. Maybe he'll take 1 trade. And then I said on the opposite. Let's say you have taken 2 stop losses or 3 stop losses. 3 stop losses means $300 are gone. Because 100 का stop loss set किया ना, मैंने कहा आपका $300 चला गया ना, आप बंद कर रहे हो। अगले दिन देखेंगे, उससे अगले दिन देखेंगे, हमने एवरेज करनी कि 300 पे बंद भी करना है। ये जब लॉस हो जाता है तो ज्यादा होती है। सर देखें, वो फिर साइकोलॉजी का मसला है, वो ट्रेडिंग का। फिर मैंने लोग देखे गुस्से में 10-10 लॉट डाल रहे होंगे कि यार अब मैंने वो रिकवर करना है। मैं आपको कल की अपनी एग्जांपल देता हूँ। गलती से 25 माइक्रो लग गए, वो 5 रेशो गलत थी, वो मैंने लॉस लिया बुल नॉक्स के लाइव अकाउंट में, रिकवर कर लिया। अगर मैं कहूँगा नहीं यार अब देखेंगे जब ये जीरो, आपको लॉस का बटन दबाना है, पिंच होगा अंदर जाके, दर्द आएगी कि यार स्टॉप लॉस लग गया। और एक और प्लीज, माइक्रोस को लॉस को मिनी से रिकवर ना करें, काम खराब हो। जिस वक्त आपने लॉट साइज स्विच किया ना, या इंस्ट्रूमेंट मिनी से माइक्रो गए, माइक्रो से मिनी गए, you will, I do not, if you watch my charts, and just honest to God, I can show you my charts right here. These are all my charts. I don't have a single mini open. Micro ES, micro ES, micro Dow, micro gold, micro, because मैंने कहा यार गलती भी हो जाए ना तो माइक्रो में होगी। अगर गलती से लॉन्ग जाना था, शॉर्ट चले गए, शॉर्ट, तो ES में ये नुकसान होता। अकाउंट सिर्फ $50 का है, मीनिंग 1500 का है। आपने गलती से 1 डाल दिया, वहां 2 लॉट लगे हुए थे, वो 100 का लॉट बन गया। ओ माय गॉड, मैंने 5 माइक्रो डालने थे, 5 मिनी डल गए। आप ब्लिंक करेंगे और अकाउंट फिर जाएगा, फिर आप कहेंगे ओ माय गॉड। चलो यार, कितना आप अपने आप को तसल्ली क्या देते हो? चलो यार 150 ही गए ना, 1500 थोड़ी गए, कोई गल नहीं, फिर बैठ जाते हैं। पता लगे कि 1500 लेने के लिए $25,000 लगा दिया इधर, तो वो भी मेक सेंस नहीं करती ना। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट all of this makes sense financially, and this is the plan, man. This is what I give every day. $50 a day can lead you, like it's $100,000 a year life if you do it properly. But this is the art actually. We should take like 5-6 accounts. नहीं, लेकिन पहले देखिए, मैं इसलिए नहीं पुश करता, बंदे से एक ही नहीं हो रहा। मैं उसको कहूँ यार आओ, क्योंकि फिर होगा ये कि मैं आपको पहले दिन आपको कहता हूँ एक पास करो, एक ELO, एक PLO, एक पे आउट लो, उसमें से कॉपियर बाय करो, उसमें से अगले अकाउंट बाय करो। बिकॉज होगा ये, आपने तो 5 ले लिए, कॉपियर भी ले लिया, अब 5 इकट्ठे ब्लो होने शुरू हो गए। जहाँ 1 का नुकसान हो रहा था, 5 का शुरू हो गया। आप कहोगे यार दिस इज नॉट वर्थ इट फॉर मी टू पुट a copier trade. So only put a copier on if you can manage your accounts effectively. Like that, that's the plan. Let me see if I have any questions. Okay. Yes, you can do dollar cost average in this. Monday market is not open. Monday market is open, but I'm not here. So now I finally will come to your. That उसके बाद मैं आपका take profit पे आता हूँ, ठीक है? Okay. So hopefully I don't have a bad news from the guy, but only thing I can do is just put a plan together. You guys have to run the thing, man. वादे कसमें कुछ करके वो कुछ और पे चले जाए, 10-10 स्लाइड लगा दें,
मैं कुछ नहीं कर सकता, right? So I can only put a plan together on a piece of paper, say, hey, so now per dia, 1-on-1. हो रही है कोई अलर्ट दे दीजिएगा, S2 पे आई कोई तो हम अभी खाली मैंने कहा per dia. Today you spend $485. I will do a parallel comparison for somebody who wants to do the 750 US. If you use the super areas code, you will get it for, so your account size here is 100,000. Your account size here is, मेरा ख्याल 50,000 है ना? ठीक. आपका ट्रेडो वेट खुला हुआ है, वहाँ 2,000 दिया हुआ है, 1,500. अब ट्रेडो वेट खोलें, थ्रेशोल्ड. हाँ, वो 750 का अकाउंट होता है, उसका एक, उसको 100K बोलते हैं, और ये 50K इन्होंने लिया. 485 US, 750 US. 3,000, 0, 103,000. 50, yeah, 50, खोलेंगे जरा. 52,000 I think, and 1,500 शायद आपको ड्रा डाउन है. एक सेकंड मैं आपको बढ़िया चेक करता हूँ. And 50,000. Okay. Okay. And one thing I want to check. Okay, हाँ ठीक है सर, आपके पास $1,500 है. So what is per dia? It's another firm that we recommend after. If you are managed to trade properly, you don't have to go through this exam stages. Remember, $50, $150, all of a sudden 450. It gets steep. देखिए 450 का अकाउंट है, महंगा है. How much money they're giving you? $1,500. If you take the 750 highest, they will give you 3,000. So account size is, so why do they give you 50,000? Just a number. It has no value. Why do they give you 100,000? Just a number. Because number of lots you can pick up legally from CME. That's why the number is there. All right. You have, sir, consistency and 5-day. I wrote 5 boxes on the top. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Please forget. अच्छा, आप भी इधर आ जाए क्योंकि ये बार-बार प्रोजेक्टर दरमियान में आ रहा है. इस अकाउंट में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, टाइम लिमिट नहीं है. आप इसको 1 साल में करें, 1 माह में करें. ये नहीं है कि मैंने रोज ही ट्रेड डालना है, मैंने जल्द. $500 मेरे हिसाब से बड़ी रकम होती है, बहुत. In a grand scheme of things, not a lot, but so first of all, your rule number 1 for per dia: infinite time. Okay. Yes. Rule number 2: you can make as much money. You can do whatever. So that's all. Number 3, they want you to trade at least 10 days. Not earlier, not so. So they want to, before they pay you, they want to see 10 days minimum. 4th condition, please close the trade at 4:30 p.m.
Go into TradeAway, log in, cancel your thing to make sure you're not in any trade at 4:30 because they don't hold your position at 5 o'clock. You can open again at 6. Number 5, in your account, make $1,500. That's your condition. Sorry, make 2,000 because your target is 2,000. My bad, sorry. So you have to get to 52,000. Number 6 condition is your max loss is $1,500. All right, that's your max loss. That's for the funded account. That is a funded account, but the word is called. These are 2-stage funded accounts. Stage 1, evaluation, FTMO. Stage 2, performance or master, stage 2. They pay us a little bit more, just get to funded. So this is straight to funded. So the word is, it's a 1 stage. Any money you make in this is yours from day 1. So it's not like, hey, I got to prove to somebody this and that. So you paid $485, you got into this account. This is like a real legend. This is now looking like a master account of legends, right? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, legends के master में 2000 बनाने हैं, यहाँ पर भी 2 बनाने हैं. Legend master says 10 days. They said 10 days. They don't have, but that's all the rules there is. So if you're gonna reset a master, don't do it. Buy a per diem. Reset is 450, per diem is 485. So 35 more दें, restriction और कम कर ले, right? So there is no point for you to reset a master account of these 2 companies. It's cheaper to go and buy here. So now let's put a plan for you together. What they're saying, at least show up on your trading 10 days. 10 days together, 10 days, however 10 days. They are not asking you Monday, Tuesday, Wednesday. They're not asking you a minimum. So all you have to do is trade 10 days. That could be in a year. That could be in a month. That could be in 10 years, 100 years. There's no expiration. So when you open a computer, if you don't see an opportunity, please don't put a trade in just because you have to trade. Because it's a live account. It's like, would you trade just your account? Like you won't, right? So you see, is S1 there, R1 there, news is there. So Daniel's routine, open the computer, check the news. I still ask people today, nobody has looked Forex Factory at all. They're like, I don't know, what am I reading? It's okay, go check. Is it red? Is it green? Is it magenta? Is it orange? And what time? Because what happens is they're in a trade, spike comes, oh my God, I didn't know. You knew, first change. So open TradeAway, open Ninja, open Forex Factory, then you check your range, base for the day, and then you start taking a trade. If you don't see an opportunity, please don't trade. Number 3, they want you to at least see 5 days where you can make $200 because they're going to put into a real account. So 5 days must be $200. See, in Legends, they're saying minimum 150. Here, they're saying 5 days you can do, but there's no time limit. You can do this as long as you want. Now, $200 in now this is the game plan I gave to my brother. I said, we're not going to attempt to make $200. You don't know how to trade. Your goal is set at $50. How can I ask you to trade? I said, you're going to start doing per dia. First, do 10 days of trading. Go in, make $20, $30, $20, 30. Finish your days first. And then when you feel a bit confidence, then take a trade. Maybe 6 trades of $20 each or 7 trade. There's no rush to finish this. So first do your attendance that I'm able to trade. So, and then, yeah, I think today's is day number 2 of per dia. And like, I think entry was $120. So I counted as a day, but it didn't give him so 5 days must be $200, 200 or plus, and total 10 days of trading.
So this is all there is to it, dear. There is no other condition. This is as good of a live account as possible. Again, if you today made $50, your balance went down, your target went down $50. You're like, I'm new, 2 micros. I want to see if, like other day, Kuldeep ji made $40. It's okay. It counts as a day. When there's a bigger swing, I will increase my lot. Maybe price goes to expected low, and I'll put in 5 micros. Then I can get more points, right? Expected high, expected low, we can get more points. But just to go in, $40, $20, $30. So it's count. Remember, they will give you $0 because your threshold is full. Just like every company, you are already at max. They don't give you the money that you have made already. Because some people, good thing to remind you, a lot of people say, I have a $1,500 account. I made $250 yesterday, right? आपने आज कहा मैंने पहले दिन 400 बना लिए आपका अकाउंट चला गया 25,000 से 25,400 में कल आए और आपने 1,500 लूज कर दिए पूरा अकाउंट ड्रेन हो गया आपने कहा ये क्या है भाई मैंने कल भी तो 450 बनाए थे आपका अकाउंट बैलेंस 1950 नहीं हो गया वो 1,500 मैक्सिमम रहेगा तो इसलिए मैं ये कहता हूं लेकिन अगर आप नीचे चले गए तो वापस ऊपर आ सकते हो लेकिन इससे एक्सीड नहीं होगा so it will not exceed more than 1,500 if you're doing the $3,000 account it will never exceed more than 3,000 the beauty of this is once you cross this finish line you can ask for daily payout आपका एक लाइव अकाउंट खुल गया आप उनसे चाहो या मुझे पूरा 1,500 दो मुझे नहीं परवाह मैंने नहीं लेना मैंने आपको $500 दिया था मैंने 1,500 बना लिया आप 1,500 सारा खींच लो they don't care they are willingly to give you the full $1,500 in the first day no problem there is no threshold है देखिए हर अकाउंट में that is showing on the board हाँ nothing like apex like no live trailing नहीं है so this is called an end of day so EOD EOD meaning end of day अगर आपने 200 देखा और 0 पे बंद किया तो 0 ही मिलना है वो -200 नहीं होता एपेक्स की तरह यस इनका लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड इनका भी हो गया इनका भी है इनका भी है इनका भी है सारों का है पर्डिया का नहीं है पर्डिया हैज नो लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड हाँ जी so works with Ninja works with TradeAway these are the condition but the account is very expensive in my opinion मेरी ओपिनियन है अब किसी को 500 की कोई परवाह नहीं है मुझे फील होता है यार 500 रकम है तो अगर बिगिनर को तो मैं बिल्कुल नहीं देता 52,000 मीनिंग 2,000 बनाने आप 1,500 पूरा 2,000 निकाल लें हाँ जी एग्जैक्टली वो 50,000 that's their when you can so anything that you make above that no that's just a number that's a number yes is okay payment can be released only the condition of $200 for 5 days आप इधर आए ओनली बुरी कंडीशन लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है देखिए मेरा कल किसी ने कहा यार ये रूल क्यों है मुझे एक बहुत एग्रेसिव हो गए थे यार फोन पे यार ये क्या रूल है ये क्योंकि उनका लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड में 400 का नुकसान हुआ कैसे हुआ so the person says I saw $400 in my P&L unrealized 2 माइक्रो नैस्डैक छोड़े हुए थे लेजेंड इसमें टेक प्रॉफिट में प्रो अकाउंट से पीए है लग गया और उन्होंने 2 माइक्रो नैस्डैक छोड़ दिए सो लेट मी रिपीट दैट इन इंग्लिश सो आई हैड अ बिग आर्गुमेंट विद समबडी एंड व्हाट दे सेड वाज आई टुक अ ट्रेड एंड आई टुक 2 नैस्डैक माइक्रो एंड आई डिड अ शॉर्ट और लॉन्ग व्हाटएवर एंड आई सॉ $400 प्रॉफिट and then I left it and I didn't care and I came back and it was showing like $60 profit okay so wherever they were price went up
So their threshold started at 2,000 because they have the $50,000 account, and their unrealized P&L, the word is unrealized, you haven't clicked close, and it shot up to $400. And then they're like, यार मैं कमरे में चला गया, फिर मैं वॉशरूम चला गया, मैं कहता हूँ अपने ट्रेड को नंगा छोड़ा हुआ है, वो जिधर घूम रहा है पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है. So it went to 400, and then market corrected itself, and he saw $60 plus, still in green. He closed the trade. He's like, pata nahi 60 na chale jaye na. Immediately he called me, and I said, go check your trade away threshold. That has gone down by $360 negative. कितना 340. So this is what happens, called live trailing threshold. If you take a trade and you're in positive, Apex does this, Legends does this, Take Profit does this, and even Bullnox does this. If you took a trade and you saw $500 and you closed it at zero, what is the real number? Zero. But every company will say, no. You saw 500, you didn't take it. We're going to deduct $500 from it. So every company, if you're reading the description, they write live trailing threshold or drawdown. That's what it means. That you will get caught in this tornado. Because a lot of people say, well, I leave the right. Because in Perdia, you can do this in Perdia, no problem. आप Perdia में ट्रेड लगाया है, आपको आप कहते हो यार जितना मर्जी बन जाए, मैंने 2 माइक्रो ही छोड़े हुए हैं ना, वो 400 पे गया, वो 40 पे बंद हुआ, आपको $40 उन्होंने दे देने हैं, उनको नहीं परवाह कि आपने ऊपर गंवाया है कि नहीं. लेकिन Legends, Apex, Bullnox, Take Profit, Legend does that too. PMA, लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं. All of this stops when you reach the target, initial target. मेरे ख्याल Legend का जो मास्टर है उसी वजह से मेरा लाइव है, सारों ने अभी रिट्रेंडिंग किया है, उन्होंने हफ्ता पहले अनाउंस किया कि हम EOD से लाइव में आ गए. So it's only once, like Initial balance. So once you reach this, so if you have a Legends and you got to $2,000, your live trailing threshold finishes. They don't chase you that, hey, you saw 300, you closed it at 100. So every company, Legends, Apex, Bullnox, Take Profit, once you get to their initial target, your live trailing stops. So in case if we get 2,000 and we draw 500, yes. So 500 is less. Yeah, then you have a live trailing threshold. Then again Yes, because you have dropped down below the live trailing threshold, right? So that's the problem. Sir, Legend Apex असल में हुआ ये, मैं Greg से मेरी बात हुई. Greg is the owner, GFF, and he said, I said, why did you do this? And why did you switch from end of the... He said, man, majority of traders were coming in. They were opening with 2 micros at 9:30. At 4:30, they were making $150. So the trade went down negative to 1,100 and then shot back up. And like, Nasdaq can do that sometime, right? And so he says, no more like that. If you go in positive, I'm going to start counting from positive. All the numbers. So that's a normal problem. And do they consider the negative thing also? Yes. So this is where they double dip you. So what happens is, if that person had seen 400 plus, but if he come back and close at negative 400, it's at 800. Yeah, but if we go into a trade, Yes. it goes negative 400, but we come out of 400. Then no positive, problem. do Then they no. add 400 to that? Yes, correct. So there's, okay, 800 to that? not 800. They don't do that. That's it. मैं कह रहा हूँ double dip करते हैं ना, आपको मारते दोनों साइड से. So क्योंकि देखें, आप लोग जो भी इसके बारे में ऑब्जेक्शन करता है ना, वो कल बहस हुई कि ये बकवास है. मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि आपको चाहिए कि कल सुबह CIBC जाके ना $2,000 रियल डाल दें. वो एकदम खामोश हो गए. अब पैसे कितने खर्च रहे हो? $200. और आप मांग रहे हो उनसे
अब देखें इनको पर डे है ना, लग्जरी है, 485 खर्चे है ना, थोड़ा वीआईपी हो जाता बंदा, आप 750 खर्च हो गए और वीआईपी हो जाए. सो द आइडिया इज हाउ मच योर डॉलर कैन गिव यू. Legends roughly $200 to for 1500. Apex again roughly for 175 1500. These are the cost if you added EN and PA. But Perdia says pay us 485, skip the line. So What's the difference in 485 or 750? देखिए वो डबल है, ये 3 लाख का है, आपको 3000 मिल रहे हैं. देखिए यहाँ पर आपको डबल, देखिए जिस तरह लेजेंड के भी बड़े हैं ना, इन्होंने भी 3 दिए, एक इससे भी छोटा है, लेकिन उस बेचारे में 750 की जान है, वो तो मैं कहता हूँ दवाई करने वाले अकाउंट है, राइट. जिस हिसाब से आप ट्रेड को खुला छोड़ते हैं 750 तो इसका मतलब एटीएम में नहीं हम कर सकते हैं. इस में हम करते हैं तो हमने जैसे 150 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, हाँ तो 150 अगर डाउन आ गया अकाउंट तो बंद हो गया, हाँ, तो जो ऊपर जाके नीचे आ लेकिन गया, पर्डिया में नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ लेजेंड में तो है, सारों में है, लेजेंड में भी है. लेजेंड में भी एक्सपेक्स वाला काम हो गया है. आपने 200 देखा, 100 में बंद किया. अब होता ही है, एटीएम लगी है 8 टिक की, ठीक है, 8 टिक्स 2 पॉइंट होते हैं. एटीएम नीचे लगी है 12 टिक की. That's it. So you entered here and your stop loss is at 12 ticks and your profit is at 8 ticks. Normal ATM, bottom of the bar, 3.5 points. So price went to 7 ticks. It didn't go to 8 ticks. It went to 7 ticks. How much whatever money you made. And then it came down to 12 ticks negative. You lost 19 ticks here, not 12. Because this is called the live trailing threshold. Because नहीं वो तो आप जहां मर्जी लगा, ओहो, लेकिन वो प्लस देखता था और माइनस देख के उसने प्लस वाले भी ऐड कर दिए, तो ये लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड होता है. हाँ, so that time it's like when we yes, close button, okay, it takes 2 ticks out. this is called in normal behavior. अब मैं आपको बताऊं ये क्या होता है. Your computer is right here. Chicago Mercantile is 1,000 kilometers from here. This is where the server is. First, from your hotspot to your router to Roger, it's 10 hops. So by the time you hit close at 32.50, maybe the exchange round trip came and they said, hey, the price was 32.49. 1 or 2. That's why I say, please never hit close. Always do limit order to exit. One tick, so because the limit order will give you the exact price. You wanted to exit at 32.89, you hit a limit order. जब आपने क्लोज करना ही है तो उससे बेहतर है बाय लिमिट सेल लिमिट लगा दें. वो जो लगा होता है ना, बाय बिड सेल बिड बाय आस्क, मार्केट ना दबाएं और क्लोज ना दबाएं. अभी मैंने मार्केट ऊपर नीचे फ्रैक्चर हो रही थी, हाँ, आया नंबर 18405, ठीक है, मैंने मार्केट क्लिक किया 375 पे सेल किया. ओए होए होए होए, 30 पॉइंट नीचे गिरी. वो गिरते क्योंकि हुआ ये कि नहीं फ्लक्चुएशन थी, उससे अच्छा अगर सर एक टिक ऊपर. सही, मैं यही कह रहा हूं ना, उसका तरीका मार्केट ना दबाएं, बाय आस्क और सेल आस्क दबा दें. उसमें ऐसा ही है वो, क्योंकि उस देखें जो कंप्यूटर आपको दिखा रहा है ना, अब मैं उसकी एग्जांपल क्या देता हूं. आप सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी एंजॉय सनशाइन. सूरज है ना, सूरज आपको, that light is coming to us 8 minutes delayed. सूरज से कम चली थी, the sunshine that hits us is 8 minutes behind. The lights from stars is coming to us trillions, billions of years later, right? Same thing. The price that's coming from Chicago Mercantile Exchange to your computer, you saw whatever the price is. That is why I ask everybody, if you want to do market, open Trade-O-Wait. Trade-O-Wait का डॉम खोल लें, साथ खोलें लाइव, वहां पर ट्रेड डालें. Because that's a live. हाँ, 1 सेकंड में खुल जाता है, ये देखिए. तो आप वहां पर अपनी प्राइस कंपेयर कर सकते हैं. Trade-O-Wait में जाएं, यहाँ पर जाएं प्लस, या सॉरी इस प्लस Trade-O-Wait प्लस, ओके, इस पे लिखें सुपर डाउन, इसको सिर्फ ड्रैग कर दें, इसको ड्रैग करें एग्जैक्टली, और यहाँ लिखें MNQ. जिस तरह वो रिदमिक का है, क्वांट आगे क्लिक करें और प्रेस ओके कर दें. ये प्राइस, इसको थोड़ा नीचे कर दें, स्क्रॉल कर दें,
ओके ये लाइव प्राइस चल रही है शिकागो में, जो निंजा को बाईपास करके ये सरप्राइज है। तो ये ट्रेड यार वो लाइव के साथ है, ट्रेडो वेट के अंदर आप खोल सकते हैं, प्लस साइन दबाएं, लेकिन ये ओनली नैस्डैक वालों के लिए है, प्लीज। डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं बिल्कुल। मैं के फोन पे जो डलता है वो ट्रेडो वेट की ऐप ही खुली होती है वो। सर तो उसको भी कंसीडर करते हैं वो उसमें थ्रेशोल्ड में भी इतना प्रॉफिट देखा। हाँ नहीं सिर्फ और सिर्फ जहां वर्ड आपको नजर आ जाए लाइव है। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 622 ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 448, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾ ਹਾਂਜੀ 623। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਗੋ ਟੂ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ MNQ M5 ਹੈਗਾ। ओके देखो ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਲੱਸ ਸੌਰੀ ਸਭ ਕੋ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਪਲੱਸ ਗੋ ਟੂ ਸੁਪਰ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ MNQ M5 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਸੈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਨਿੰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, क्योंकि निंजा ने चार्ट्स करने जी हाँ नहीं उसमें सिम नहीं होता। ट्रेडो वेट लाइव अकाउंट है तो सिम नहीं होता। सो ट्रेड वो भी कंसीडर करते हैं वो उसमें बिल्कुल। देखिए मैंने फिर बार आपको यही बताया नहीं वो भी एक काटा जाता है। देखिए लेकिन वो ये सारी मसले रुक जाते हैं वन से। आप देखें मैं हमेशा ये कहता हूँ 1500 को समझे आपने 1400 रखा हुआ है, $100 का तो बफर आप अपने आप को दें ना। तो ये कंट्रोल पैनल के अंदर हमें एक उसका अकाउंट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। लेजेंड अगर टेक प्रॉफिट। yes, so you will open 2 windows of trader weight. So what I said was you can open trader weight DOM inside trader weight. So on the top left you have a plus sign. You can open up a DOM, you can open up accounts, you can open up charts. It's a full platform. But if you want to do take profit and per dia and legends, you have to log in 3 times. 1 into legends, trader weight, 1 into per dia trader weight, 1 into legends, right? So disconnect नहीं मैं मेरे कंट्रोल पैनल में लेजेंड नहीं होती। हाँ नहीं फिर डेटा डिलीट होगा। हाँ तो क्योंकि डेड अकाउंट्स अगर होंगे तो उनको डिस्कनेक्ट करें। डेड अकाउंट को ना कनेक्ट करें, डेड अकाउंट डेटा डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसमें लिखा आएगा इंस्ट्रूमेंट ना सब्सक्राइब। वो मैंने एंट्री डाली तो हाँ क्योंकि वो डेड अकाउंट से उठा रहा है आपका डेटा। जब मैंने देखा तो वो 150 बना हुआ। हाँ ठीक है वो, लेकिन वो भी इत्तेफाक ही हुआ है, कोई कमाल नहीं हुआ। So तो अगर वो अकाउंट एक्टिव है तब वो करता है। कॉपियर में सारी कंपनियों के अकाउंट जितने लाइव और नॉट डेड। अब डेड होगा तो आपको बड़ा मसला। सो इफ यू हैव अ डेड लेजेंड्स, डेड एपेक्स, डेड बुलनॉक्स, डेड, please remove that connection, otherwise you will have random prices coming in, right? So dead account को ना कनेक्ट, क्योंकि मैं कई दफा लॉगिन करता हूँ, वो कहते हैं यार मैं प्राइस कुछ डाली मिला कुछ, पता लगा लेजेंड डेड पड़ा था, बुलनॉक्स डेड पड़ा था, वो भी कनेक्टेड है, वो डिलेड फीड आ रही है, तो आपका अकाउंट गलत, रियल वाला गलत प्राइस पे उठ गया। So don't do that, please. So make sure if you have a dead account, just remove from connection. Just say, or if you're like me, I trade sometime only legends, only apex, only this, so I disconnect. एक अकाउंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक अकाउंट नहीं एक नहीं, सारे जो कॉपियर में है वो सारे एक्टिव होंगे। डेड अकाउंट कोई ना हो। अगर आपने लेजेंड नहीं कर रहे और आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो डेड अकाउंट भी तो नजर आता है ना, लेकिन वो डेटा नहीं आता, तो ये आपने करना है, राइट? तो ये जो बुलनॉक्स में वो रिदमिक लेते हैं या वो दूसरा वाला? बुलनॉक्स में रिदमिक है, ये बुलनॉक्स में नहीं है। Yes. Any questions on this topic before I move into the take profit? So what I just said, trader weight allows you to trade from within the trader weight window. If you're having connection problem, you can do buy and sell, close your trades from trader weight. It's a full application. You can do this on phone. You can do this on trader weight. You can do, by the way, 10-15 minutes चाहिए इनको सिर्फ take profit कर दो। मैं सिर्फ एक गिलास पर लूँ इधर। So, oh, thank you. You can pour in there. इसमें डाल दे। आज कितने बजे जाना? सर आज मैं 2 बजे।
सर दी कैपेसिटी है ना बोल लेते हैं तो सुन के चक्कर आने शुरू हो जाते हैं वो जब आप ले अकाउंट तो उनका जिसमें जगह कोई करेगा एक वाइट डिफरेंस वैसे तो मैथमेटिक्स चलिए अच्छा मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ डिस्टर्ब हो जाना फायदा कुछ नहीं है मैं नाश्ता करना है ये करते हैं पर मैंने तो स्टडी फॉलो किया है मैंने हेल्प की थी और व्हाट सो वो दिन तो खाली हां जी मैं मिस किया था तो चलने बहुत ही ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ R2 ਤੇ ਆ R2 ਦੇ ਲੋ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ और बॉर्डर था तो पहले ही पता लग गया कि इथों एरिया ट्रेड तो नहीं थले जाना या डबल बेनिफिट राइट सेशन मॉर्निंग ये भी है अगर ऐसे हाई वाले तामिल लो वाले तामिल दो माइक्रो शुरू और अगर ना 5 पैंट तो कटना लेना 5 पैंट आराम ना नेक्स्ट ना अगर विक्रम से लिखते हैं मेरे लोग ना है उसे हमारे मिड रेंज हुआ ट्रेडिंग थोड़ा टाइम कितने तो बढ़ गई जैसे कि थैंक यू अच्छा रास्ते भाई जो बढ़िया आपने बताया 50,000 है अकाउंट का साइज नहीं कि तेरा माइक्रो चलाओ का उसको 2,000 आपको बनाना है 2,000 करेक्ट and then you are eligible to withdraw it. हाँ हाँ पूरा 1500 निकाल नहीं पूरा 2000 ये 2000 निकल सकता है फिर अकाउंट डेड है Yeah, so are they going to हाँ फिर दोबारा बैठ जाए हाँ 3 के बाद मना कर देते हैं मेरे ख्याल है 2 हाँ फिर वो चाहते हैं कि उसको बेस बनाएं और ऊपर ओके
188 हो गया आज के, 188 हो गया आज के। हाँ तो अभी और सर ये आपका डिसीजन है, मेरी तरफ से 23 घंटे उस एरिया पे मिडल नहीं है ना, तो क्यों कर रहे हैं? कल आना है, कल ट्रम्प जिंदा है, हमारी मार्केट खुली है, चीजें चलेंगी। So, okay. अब मैं सिर्फ right now will explain take profit full process like and then we'll call it a day around 2 o'clock or maybe 1:30. So they're not consecutive days. You can have alternative days. You can do whenever. There's no time limit. 5 दिन ऐसे होने चाहिए, 10 में से 5 ऐसे। अगर आप 100 दिन लेते, मैं आपको कहता हूँ आप 3 माह लो, 3 माह 90 दिन बनते हैं, 90 में से 60 दिन बनते हैं ट्रेडिंग के, 10 से ज्यादा हो गए, ठीक है। आप 60 दिन के अंदर कोई ऐसे 5 दिन निकाल लेना जिसमें 200 बनाओ, कोई भी। So once you complete those 5 days making 200 only, then you are eligible to pay. करेक्ट। आपने 60 दिन ट्रेड किया और रोज $100 बनाया, आपने 6000 बनाया। एक कंडीशन पूरी हो गई 2000 की, दूसरी कंडीशन सारी हो गई लेकिन 200 वाली नहीं हुई। तो कोई ऐसे जब आपके, मैंने इसीलिए कहा अगर आप स्लोली चलते चलते अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा लेंगे ना, लेट्स से अगर आप 100 एवरी डे 150 बनाओ, मेरा क्वेश्चन 100 बनाओ और आपने 10 दिन खेला है, बल्कि 30 दिन खेला है, आपका 3000 का टारगेट पूरा हो गया, पूरा वो टारगेट से ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता 200 वाले जहां आपको मौका मिले वहां 200 बना लो, अपने जिसे कहते हैं ना सूच में। No, it's not a payout. I'm telling you, after you make this, so I kind of forgot to do the part 2 of this. Once you complete this or this, they give you an option. They say, congratulations, you have managed to complete this. What would you like to do? You have 2 options given to you in the email. Would you like to withdraw this 3,000 or this 2,000? Okay, they will give you an option. Would you like to take the money? Or, it's like playing the video game of would you like to leave that balance there and get a daily payout now? So, you have 2 options today. How much somebody spent here? $750. They got 3,000. Some people say, you know what? It was a good run. I can take $2,350, buy a real account. Like, it's fine. You can buy an account again. So, it's no problem. 2 राउंड तो कर सकते हैं। देखें, एक बंदे ने 750 लगाए, उन्होंने 3000 बना लिए, उनको आज 2 चॉइसेस मिलेंगी। आज कंप्लीट लेस एक बंदे ने कर लिया। What would you like to do? Either withdraw the 3,000 or leave the 3,000 in their account. They give you a choice. In his case, when he reaches 52,000, they will give him an email. Says, you have done 5 days, you have done 10 days, congratulations, 3 conditions, 2000 बना लिया, 5 दिन पूरे कर लिए, 10 दिन पूरे कर लिए, आपको email आएगी. Do you want to take 2,000 or do you want to leave 2,000? Some say, hey, I spent 485, I made my money, I know how to trade now, I will go open a real GFF AMP account, right? Some people, I like the other way. I said, all right, keep my 2,000, but every day, whatever I make, send me after that. Oh, so they can. Then the $200 per day condition is. खत्म 50 बनाओ, वो कहते हैं मिनिमम तो 100 बनाओ, आप 50 बनाओ, अगले 2 दिन नहीं ऐसे देते हैं 50 नहीं वो 100 से कम नहीं बेचते, देखें। लेकिन आपने $25 बनाए, 4 दिन 25 बना लेंगे, 5वें दिन आपका 100 बन गया, तो वो आपको $90 बेच देंगे, 10% रखते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि उनमें ये, अगर आपने $10 रोज बनाए और 10 दिनों बाद 100 बना लिए, तो आप 100 10 दिन की, तो उनकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार आपने बनाने ही बनाने हैं 50 या 100 या 8, जितना मर्जी कम बनाए। और एक दिन छक्का लग गया, आप बंद हुए, ट्रेडो वेज बंद हुआ, अकाउंट बंद होने के बजाय 2000 बंद हो, वो भी बेच देंगे, उनको कोई परवाह नहीं। आप न्यूज ट्रेडिंग करते हो, आप ये करते हो, वो
100%. Because no, that is you. That's a suicide. So 4:30 is the deadline. Correct. So this thing, round 2 account for legends. So in that case, what happens? Sorry, say that again. Round 2 of legends. Yes. अगर हम threshold हो गया और account बंद हो गया, तो आप वापस ये पे आते हैं. फिर हाँ, फिर 99 सांप वाली खेली हुई है ना, 99 पे गिर के. So again we have to do round 1. Yes. या आपको कहते हैं 450 फिर राउंड में बैठ जाओ. अगर आपने 450 देना तो पर्डिया में क्यों ना बैठ जाऊँ? मुझे क्यों जरूरत है कि मैं 450 रीसेट दे के पीए में बैठूं? पीए का तो होता है 200 में मिल जाता है पीए. एपेक्स में तो एक दिन बाद मिल जाता है क्योंकि आपने पास किया. तो सर वो इसलिए चलाते रहते हैं, लोग गिरते हैं उठते हैं. हर फंडेड कंपनी के सीईओ से हमने बात की हुई है, सिर्फ 3% लोग पैसे कमा रहे हैं, 97% उनके अकाउंट भर रहे हैं. इसका मतलब हम अकेले नहीं है, 97 नहीं खाली देखिए डिपेंड, उनको तो ये फायदा है. लेकिन ग्रेग की मुझे कॉल आई है जो सीईओ है, वो कहता है यार आपके इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पे आउट्स जाते हैं. बिकॉज लोग सुनते हैं ना, मिड बैंड सुन रहे हैं, जो लोग जापानीज कैंडल करते हैं उनका स्टाइल डिफरेंट है. हमारा है यार कि आप रोज के एरिया कोई और नहीं देता ही नहीं है लाइफ में. आप एरिया से ट्रेड करो, आपके एरिया है, चार्ट्स हैं. तो वो कहता है काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ यू गाइज वी पुट इन द, एक हमारे 2 पे आउट डिनाई किए. अब मैं उसकी स्टोरी क्विकली. सो 2 पे आउट्स गॉट डिनाइड बाय लेजेंड्स. So there were 2 friends, our subscribers. They sit together in one office and they're doing together trading. Both have 10 accounts each on legends. And they did PA, then they did PA. You know how much each guy requested? $15,000. That's copier banaye. And they have got hundreds of thousands of dollars from Apex, Bullnox, and then they said, well, now we're doing, they sat together. So Apex legend calls me up and says, we are going to deny. I said, on what grounds? We are suspecting they're cheating. I said, how can they? So I wrote an email to them. I said, but what I can say is, when you start to make a lot of money from they kind of start to panic. Why are they passing? So the idea was, I told the men first, so I kind of gave them a workaround. Don't request 10 payouts same day. बन गए ना? एक को आज डाल दो, एक को 3 दिन बाद. उनका सिस्टम फ्लैग ना करे ना यार कि एकदम 15,000 किसी ने मांग लिए हैं और उन दोनों के डिनाई हुए, अकाउंट नहीं बंद हुए. I said, I gave them a workaround. Trade for another 10 days, but random trades. Person A does maybe this, person B does this, start to make 100 to 50 and then request it later and shut down and move to a different company. So does this mean that the money? No, money is not there. They just say trade 10 more days. So that's all. Because that's all they do. हाँ जी. देखें मैं इंडिविजुअल तो आप 4 एक अकाउंट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं. हाँ मैं जानता हूँ जिन्होंने 6 भी निकाले हुए, तो वो एक निकाल लिया, एक वाइफ के नाम पे ले लिया, तो कोई बात नहीं. हमारी प्राइवेट स्ट्रीम है, इट्स ओके. उन्होंने एक हमारी जुमले से तो नहीं अपनी पॉलिसी चेंज करनी. नहीं दे डोंट केयर. वो हमारे 50 बंदों के सेम आईपी होते हैं. हम इकट्ठे इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं. मैं तो उनको लेजेंड को कहा, मैन ऑल आवर नंबर्स हैव टू बी द सेम. एवरीबॉडी डज फ्रॉम सेम एरिया. So how can you say we are working together, right? So our software is giving you that, hey, buy from 5210. Everybody buys from 5210 across the globe. Everybody will be 5210. So numbers must be same. IP address, I have 50 units there, 50 there. They all work together. One thing Apex then did says, send us a video. So I asked people, go to the other room, make it, because one guy requested $30,000 from Apex. So they asked, say, hey, are you truly doing it together? And or things like that. But 2 companies don't give a crap. Take Profit and per deal. They said, man, it's live. Yes. Which one do you recommend? हाँ. तो 1500 पड़ा रहेगा. हाँ ठीक है. एक्टिव आखिरी $10 तक एक्टिव रहेगा. तो लेकिन आप क्या करो, मैंने बेटे को कल कहा, he passed this account and I posted on my status.
He's done his 5-day thing. I asked him, do you want to take 2,000 or do you want to leave it? Do you want to take 500? Maybe you take your money out, leave 15 in there. So he's like, I'm thinking about it. So, sir, dekhiye. The question was, what do I... हाँ बेगम ले लो कोई गल पूरा कर दो नो प्रॉब्लम सेम ही हाँ मैं उन्होंने क्या हूँ अपनी माँ दा कर So question was, what do I recommend? I don't recommend you anything until you know how to put a trade in. None of these companies नहीं देखिए बात ये मैंने आपको चारों एक्सप्लेन किया मैं जरा जूम इन करूंगा टेक प्रॉफिट My favorite today is take profit. Why? Least amount of rules. But yesterday I pushed them legends. You're saying take, and why are you pushing me? Here's the thing. He's coming back after a few years and he's beginner. If I push him, take profit is 105. That account is 50. So double it. Number two, he needs a bit of a practice to get his entries right. If you don't know how to enter a trade, I swear to God, there's not an amount of an account that's going to save you. I don't care. You put $50,000 of your own account, like FTMO, biggest account, they give you $20,000. You know, that's the biggest account I know of. 20 grand is a lot of money. And how much that account is? $1,200. So $1,200 you put in, they will give you $20,000. You know, $50, $485. So $1,200 is the biggest account you can buy. I know people who lose that. वहाँ भी लॉट का नहीं पता, गलत लॉट लगा रहे हैं, 5 लगा दिए, 8 नहीं लगाए, हेज नहीं करना आया, हेज कर लिया. आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको वापस सिम में जाना है, देखना है कि मेरी एंट्रियां नहीं सही. आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना रहे ना, मैं कोई अकाउंट लिख दूंगा ना, आप ब्लो कर दोगे. जिसको एंट्री आ गई है वो कल किसी का फोन आया, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा, एंट्री मसला है या डिसिप्लिन मसला है. That's all. So it's mostly coming back to discipline, because then I said, you know, if you entry have no problem, go to take profit. आप legends पास कर लें, आप mandatory नहीं है कि उनका round 2 में जाए. मैं आपको बता रहा हूँ, आपने legend पास किया, आपने कहा मैंने सारी प्रैक्टिस कर ली है $50 में, मैंने पीए नहीं लेना. आपको कोई ये तो नहीं कहेगा पीए जरूर लो, आप छोड़ो, नहीं ना लो तो कैंसिल हो जाता है ना. देखिए मैं आपको EAs क्यों करवाता हूँ, why do I ask you to do this? It's for practice. If I ask you take $1,500 and go to GFF or AMP, हम 9 से लेके 1 बजे तक बैठेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि हाथ कांपते हैं ना, रियल पैसे हैं. आपने गलती की, हमने निंजा 7 में हिम्मत नहीं होती थी ट्रेड डालने की, अपॉर्चुनिटी मिस हो ही जा रही है, नहीं ट्रेड डाल रहे क्योंकि गलत गया तो अकाउंट जाएगा, रियल पैसे हैं. Here $50, you're still all right. I know how to do bottom of the bar now. I know I can spot a divergence. Now issue became people didn't even care about $50. They were like blowing and blowing. 50 से 150 पता लगे एक भी पे आउट नहीं है और $6,000 फंडेड कंपनी को दे चुके हैं. ये भी रॉन्ग है, राइट? ऑब्जेक्टिव ये नहीं था क्योंकि आप चेस कर रहे हो सिर्फ 1500. So if you successfully complete your legends, it's not mandatory for you to take a PA. You can say, all right, I had a good run. I now know how to run my thing. I will go to take profit. So again, take profit, again I have to start. Correct. Because it's so it will delay. But that's a practice round, right? So it all depends on, but if maybe you go and you're like, man, I'm so good at it, I will go straight to Perdia, right? I wanted to practice a little bit. Can I make $1,500 in this time? I know my entries, I know my stop loss, I know my discipline, I know everything. And now I'm ready for Perdia. Because rather than me investing $1,500 of real money, I will buy Perdia for $500, right? So they're giving you 3 times more money in your account. So all of these funded exams are there for you to get practice on your ninja. How to buy, how to sell, all of those.
मार्जिन नहीं होता. नहीं, margins are if you have a real account. Real account margin, what does that mean? ES1 lot is 12, let's say $650. They said make sure you have 1250 before you put a trade in. 2000. So a lot of, they don't want smaller accounts to be trading volatility. So they said increase the margin. किसमें? बिल्कुल अलाउ जी, कोई मत. प्रेडिया आपको as close to live ले जाता है. वो कहता है भाई आपके पैसे हैं, आपने उसको ट्रेड करना है. न्यूज मीनिंग के आप सीपीआई आ रही है, आपकी फीलिंग है कि इंटरेस्ट रेट इधर जाना है या इधर, तो मैं लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ, गैम्बल हो रहा है. तो न्यूज ट्रेडिंग सम कंपनीज डोंट अलाउ. These 4 companies don't allow news trading. Perdia allows FTMO. I think I don't know if they allow or not. So that 4 companies, regardless of whether you're on an EA or PA, doesn't allow? No, all EAs they allow. Okay. All PAs nobody allows. So let's break your. If you are able to trade, go with take profit or Perdia. If you're not able to trade, you still need practice. Pick legends. That's it. These are the 2 companies. So my short answer is assess yourself. Am I able to make money with like 1 mini, 5 micro? Can I take a mid band? I know how to put a limit order. I know how to put a stop loss. I know how to use an ATM. मैं फिर बाद में कहता हूँ, your job is truly only clicks. Everything else software is doing. Area software is doing. Now with the new version, area gets plotted onto your charts. All you have to know is buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, stop limit, things like that. अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है, फिर प्रैक्टिस करें कि जब तक आप, और कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस पता क्यों कर रहे हैं? डिसिप्लिन की खातिर, कि यार डिसिप्लिन नहीं है, आपको ये पैसे इधर लूज होंगे, आप 1500 2000 लूज करोगे, बंद कर दोगे, कभी ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे. एक बंदा कि थक जाता है ना कि यार 100 साल में खेल रहा हूँ, नहीं जीत पा रहा. असेस योरसेल्फ के मसला डिसिप्लिन में है. हम लंबे लंबे लॉसेस में बैठे हुए हैं. 500 एक स्टॉप लॉस, 1 stop loss. Okay, it's before I go, this is bottom of the bar, 30-20. If you entered here after SRES, this is green. You want to go long. What is your stop loss here? Your stop loss is 3.5. So 3.5 times 50, for example, 187, 100 kitne bane? $175. So this is the maximum stop loss if you're doing 1 mini, because from here 3.5 points negative, you have a black candle. So the way it falls is, but if you take a bottom of the bar, your TP is, let's say 8, your stop loss is kitna bana? 3, 12, 15, 14. 14 hi banta na? Yeah. So this is a normal stop loss. So what happens is majority will take this entry, but don't put a stop loss. So, all right. So this is the word is called the retracement divergence. Exact word is where the price came down in the bar, but BBs and strength didn't come. Apne background green tha, apne yahan se buy liya. And you said, all right, I'm attempting this. Everything looks good. Everything is green. And my bar, I will do a buy limit here. And you put your TP and ATM was 8 and 14. SL14, TP8. That I'm risking 3.5 ticks, points to 2 points. First of all, I can sit down. Most people won't put this on. So what happens is this. 3.5 minus 175. I'm going full mini, because, just for example. 175, 250, 350, 400, 575. You kind of stop looking at the stop loss. You get numb. And it's a human psychology. I've dealt with this for 20 years, and a lot of students too. I'm watching it. नहीं क्लिक करते क्लोज. दिल क्या कह रहा है? अभी आई, अभी आ जाएगी, अभी आई, क्योंकि वो ऐसे हो रहा है. -175, -300 के बाद ना
उसने -150 तक आपको ले आई, आपने कहा नहीं यार यहां तक तो आ गई है तो थोड़ी और, अभी भी बंद नहीं किया, हालांकि पहले 375 माइनस देखा है, दिल कह रहा है नहीं आएगी, तो डैनियल कहते हैं नो, डू व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक. So your mind is and hand is conflicted between do I take a stop loss, do I close it, do I not close it? ATM will do it for you. Meaning it will just kill the trade and -14 ticks and you're done. You're like, oh my God, I feel like crap. My stop loss got hit and I took it. But that's a momentarily pain. Psychology does say 175 to 300. Now this is a PA, for example. PA, my first mistake here is I have put in a full lot. And I was told by Rafe Daniel on this account, I'm not allowed to do a full lot, maybe a micro. So first mistake is you have put in a full lot, just thinking that I want to be out quickly. So maybe 5 micros right here. So that's your second mistake is you didn't have a stop loss. Because what happens is 6 out of 10 price does reverse. और आपका 0 के प्लस हो गया and you felt like see last time नहीं लगाया था ना तो हो जाती है प्राइस, मुझे पता है प्राइस आ जाती है. मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें से मैं भी गुजरता हूँ. ऐसी नहीं है कि मेरे में ट्रेनिंग लेक्चर देना आसान है, सामने बैठो पता लग जाता है कि आप कितने स्टॉप लॉस लगाते हो. सो 300 हुआ, 500 हुआ, 700 हुआ, अकाउंट चला गया, कंबल लेके सो जाता है, वापस ये में जाएगा कि अच्छा तसल्ली क्या दे रहा है यार, चलो 150 ही गया ना, मैंने कौन से 1500 लगाए थे. यही फीलिंग आ रही है ना. आप जब अगर खुदा ना खास्ता कहेगा यार 500 ही गए ना, 1500 तो नहीं गए, लेकिन यार 500 का लॉस है यार, कोई मजाक थोड़ी है. सो प्लीज पिक योर लॉट साइज अकॉर्डिंगली. प्लीज PAs डू माइक्रोस एंड इन ए $1500 माइक्रो 5 से जानना चाहिएगा. माइक्रो 5 MNQ, आजकल तो 2 MNQ आपका 3000 का अकाउंट उड़ा देगी. इतनी 2 MNQ 700 पॉइंट मूव हुई है कल रात. 1 MNQ $2, 2 MNQ $4. 700 का $2800 का अकाउंट 2 MNQ उड़ा सकता है, मैं आज की डेट में बता रहा हूँ. और हमने 1 MNQ से भी उड़ाया हुआ है. इंटरेस्ट रेट वाले दिन बैठे हुए हैं मैं और हम दोनों, वो स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ. एक्सट्रीम लो पे लिया, एक्सट्रीम लो पे MNQ गिर चुकी थी पता नहीं 700 पॉइंट. 2 माइक्रो हमने लगाए, वो वहां से भी 1000 पॉइंट और गिर गई. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, even 2 MNQs can really destroy a $1500 account. So Nasdaq, do carefully. So exactly, वो आई और स्टॉप लॉस क्या. हालांकि इंटरेस्ट रेट उस दिन कम किया था, उस दिन घटाया था, और हमें था कि चलो यार हम 15 पॉइंट का TP लेंगे, स्पाइक आ रही है, वो तबाह कर पलट गया था ना. तो एनीवे हाँ एग्जैक्टली. सो हाँ जी सॉरी ब्लैक, मैं अभी आपको बता देता हूँ. सो this is your stop loss. If you hit 8 TP, so now I'll tell you the psychology, what I have seen with a lot of students do. यहाँ पर तो मोरालिटी खत्म हो जाती है ना. -1500 को अकाउंट में -900 देख के बंदा वैसे कहता है कि मैं चला जाए यार, चला ही जाए, अब मैंने देखना ही नहीं है. तो वो कहता है अब तक जब तक 0 नहीं होगा ना मैं ट्रेड को देखता रहूंगा. तो ये मसले होते हैं, राइट. सो 17 because here your loss was 175 at $1100. That 175 looks good. Like you're like man, account तो बच जाता तो मैंने बचा ही लेता कुछ, right? So everybody goes through its normal emotions. Just the more people who become numb to this and they put in ATM, their success rate is higher. All right. Now you took one trade, let's say 5 micros. मैं आपको real करता हूँ. Let's say how much loss of if you take 5 micros and your stop loss 5 times 5 times 3.5, your loss would be 8750 in this trade. So if you took 5 MES on bottom of the bar after confirmation of SRE equals S, 5 micros by 3.5 is $87. That's your stop loss
87 है ना, आधा कर दिया ना 175 का, आपका टीपी कितना आया? 2 पॉइंट है, $50, ठीक है। अब आप सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, you say TP of 8 and stop loss of 14 will give me $50 of profit and stop loss of 87.50. Now you start to assess, all right, so you're almost done your daily target. Your target should be $100 a day or $50 a day, as I told. So you're already done. If my brother picks one trade of this bottom of the bar with 5 micros, 3, all he has to take is maybe 4 trades in a day. $20. Remember, he's doing $20 per trade. How many trades have to go against you before you stop trading? In my opinion, 3. If you hit 3 back-to-back losses on bottom of the bar or top of the bar, you gotta call it a day. So what that means 90 times 3, $270 you have lost in your account. Come on, man, call it. It means things are not going in your favor. Either SRES is failing, or because market can do anything. It doesn't have to be. Like today, he picked a trade and out of 9 days, 10th today is the one day it failed. But here's the problem. In the trade, he took here, I took here. My stop loss was 87, his stop loss was 34 ticks. That was the difference. He took the top of the bar, I took bottom of the bar, same trade. But I took 87.50 loss, he took a bigger loss because he took it, the entry, while it turned green. I took it, I'm like, okay, I'll wait for here, and then I'll take the risk after it turns green. Because sometimes it turns green, does a bit of a retrace, then shoots back up, right? So retracement divergence. So in profit, you have to stay disciplined and then say, you know what? I have a $1,500 account. What is the max loss I'm willingly to take in my master, in my per dia, in my take profit, that I'll call it a day. And I think, again, it's around what, 30% or 20%. So $300 maximum, and you're not trading anymore because 3 minus कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा. ये तो नहीं है कि हर टॉप ऑफ द बार फेल हो रहे हैं यार. कोई आपका let's say अगर 70% भी लगता है तो, but then you stick to either area or top of the bar, because what happens is this failed, right away you took a mid-band trade and that failed too. So आपने अपनी strategy फौरन ही बदल ली कि अब मैं mid-band try करता हूँ. अगर आप, this is the lowest stop loss trade in our all 14 type of trades. 30-20 is green, buy from the bottom. 30-20 is red, sell from the top. So that's called a bottom of the bar, top of the bar, or mid-band 15-10. It's the same thing here. So, but mid-band has a slightly bigger stop loss because you have to wait till 8.5 till your candle is formed. Everybody clear here? So this is a motion. Some people made $50 here. अब वो excited हो गए, यार TP तो hit हो गया, फिर market दबा दिया. अब मैं नहीं समझ आता कि आपने एक दफा चल रही थी गाड़ी, या तो लेना था ऊपर तक, ट्रेल करना था, 50 ले लिए और वो 200 पे चली गई. आपने कहा शूट यार, ये तो मिस हो गया, मैंने तो 50 लगाए थे, वो तो 150 हो जाने थे. फिर आपका माइंड कहता है यार ये अब ग्रीन हो गया, दबा दो. ग्रीन, बैकग्राउंड भी ग्रीन है, हालांकि आप टॉप ऑफ द बार उठा रहे हो, वो 1 टिक मिलना है, ज्यादा से ज्यादा कितने 4 टिक्स मिल जाएंगे. आपने यहां से बाय किया, प्राइस यहां नीचे आ गई, एंड देन आप कहते हो यार ये क्या हुआ, जब मैं एंटर होता हूं प्राइस नीचे चली जाती है. ऐसा नहीं होता. You have to wait for the next bottom of the bar until, because ये होता है ना कि जैसे 50 लिए वो 200 चढ़ गई, आपने फिर कहा यार शूट, ये तो गलत हो गया, मैं तो सिर्फ 50 लेके बाहर आ गया हूँ. अभी और जाएगी, और मार्केट दबाया और वहीं से वापस आ गई, और आपने कहा. तो डे मैं 1000 दिन से फ्यूचर कर रहा हूँ, मेरा ये टाइम आ गया, 20 साल से मैं कर रहा हूँ, 1000 दिन से मैं फ्यूचर्स. कल भी डिसिप्लिन तोड़ूंगा ना तो कल फिर नुकसान होगा. ऐसे नहीं होता कि मैं 1000 दिनों के बाद बहुत कोई मास्टर हो गया हूँ. इट्स ऑल अबाउट इमोशन, डिसिप्लिन. आई गो थ्रू द सेम थिंग्स, आई गो अप एंड डाउन, आई हैव लॉस्ट EAs, PAs, per dias, bull noxes. It's just now you become, one thing I do know,
ATM will save you temporarily, meaning that pain is short-lived, and then you start to make it up again. And like I said yesterday, my bull logs, I accidentally put in 5 lots. It had a multiplication of 5. I ended up taking 25 on 2 PAs, and both are ready for a second payout. And I'm like, oh my God, this is a huge thing. And all of a sudden, market fell. I saw minus $2,000. So I have a $44,000, and I saw I'm like, close. I made a mistake. All right, okay. So felt crap. I'm like, come on, man. अब 5 दिन का और काम गया. अब 2,000 recover करना है. अच्छा मजे की बात है. Already had 221 made. And then थोड़ा आया यार, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लूं. So again, degree, discipline, revenge goes through me too. So that 221 went to minus 2,000. Now I'm looking, all right, account is safe. It's still threshold ke above hai. So I start playing, all right, bottom of the bar, maybe went into 5 micros. And then in 2 days, I recovered everything. So imagine that $25 mistake, and it's going down and minus 3,500 and my account is gone. Now I'm thinking I've lost a PA. I got to go back to EA. So please don't let your EAs go until the last breath, right? So if you have lost 270, I think your PA needs the rest. अगर 1500 का है, अगर 1500 के, मैं तो 3000 में कहता हूँ, अगर 300 काट के ना काट दो यार, कल वापस ले लवांगे यार, कोई गल नहीं. इनकी लाइव एग्जांपल, एक दिन हम दोनों गोल्ड में गए, बैठे, मार्केट नहीं मूव हो रही थी. लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ. 14 फरवरी, उनको डेट भी याद है. 14 February, gold came to expected low, and we weren't trading because there was no area and nothing. And इन्होंने कहा जी गोल्ड ले लिया. मैंने कहा मैंने भी ले लिया. I put a stop loss in on my Bullnox PA. He did not. I got kicked out at $700. मैंने इनको लाइव दिखाया. मैंने कहा ये देखें सारा मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ है. वो कहते हैं मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था. तो PA चला गया, राइट? उन्होंने गोल्ड में सब कॉपियर पे लगाया हुआ था. और so, अब हुआ ये कि मेरे 700 का नुकसान हुआ. मैं फील बैड किया यार, मैंने उसमें से पे आउट दूसरी दफा ले लेना है. अब वो PA के लिए काम कर रहे हैं. So stop loss, please, keep telling you guys. So now finally come back to take profit before I wrap this thing up. So please know your lot sizes. Please, know your account sizes. I was doing NBT with one guy. I strictly told everybody I'm doing one MES. The guy puts a cross and he puts a one ES. कि राफे भाई ने जो ट्रेड डालना है वो तो 100% जाना है. हमेशा मैंने स्टॉप लॉस लिया $25 का, उनका अकाउंट चला गया क्योंकि उन्होंने क्रॉस में फुल डाला हुआ था. So I said it doesn't mean that I will put a trade in, it will go in my favor. So all right, take profit. So account is $105. This is stage 1 EA. Okay, so this is how your account is open. 25,000, 1,500 in trade await. What is your target? 26,500 and cannot go to zero. First of all, it's end of day. So it's not live trailing threshold. So it's not like Apex, not like, so it is what you see, what you get. Number 2, if you complete in 30 days, no PA fee. So they said, you paid us a little bit more now, you trust us, we trust you. If you pass, no PA fee. So 3, make 1,500. Make 1,500. Number max loss minus 1,500. So don't lose 1500. नहीं lose करना. 430. Number 4, 430. 430. You gotta close your trade. And number 5, minimum 5 days. So they are asking you to trade for 5 days. So 5 days. To make 1,500, minimum 5 days. So, but they say, you know what we like, make 750 a day maximum. You cannot complete in 1 day, but we'll let you complete in 5 days. EA, ये EA की बात है. EA 750. EA में तो कोई fees नहीं है. So, these are the rules. Make 15, don't lose. $750 से ज़्यादा नहीं कमाने एक दिन में. So, if you made Day 1, 750, day 2, 750, 111, they will let you pass.
पास हो गया ना, 750 दूसरे दिन, 750 पहले दिन, 3 दिनों में डॉलर किया. They don't care. Micros, minis, average, 100 trades, 1,000 trades, they don't care. They say, we are going to treat you like a real account. So these are the rules. If you made 750, they don't give you any threshold because you already max, 1500 max hai na? Second day you made anything. So you finish this, you get qualified to go into pro account. So this is take profit stage 1. ये आपने करना. इसमें कोई हट रहा है 1500 तक, वो सारी कंपनियों में हट रहा है. हाँ जी, वो एपेक्स में भी है, बुलनॉक्स में भी है, लेजेंड में भी है, टेक प्रॉफिट भी है. मुश्किल है क्योंकि आपको टीपी से निकलना है. लेकिन उन्होंने कुछ रूल आसान कर दिए ना, एक दिन में कर लो. आपको अच्छा MNQ मिल जाए या MES मिल जाए या एरिया मिल जाए, 1 डे में PA पास हो जाता है. नहीं, किसने कहा है माइक्रो में पास एक दिन में करना है? तो आपको एक दिन मिनिमम का है, मैक्सिमम तो नहीं का. वो क्या 50 दिन ले लें PA? नहीं, देखिए उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कौन कैसे ट्रेड करता है. उन्होंने कहा यार बस एक दिन में नहीं, इससे ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं 105 में 4 लॉट लगा रहे हैं, कहते हैं यार जल्दी जल्दी पास करें ना. सो और उनको या सो PA is, first of all, PA becomes $0 because you have not broken the rule. You have, if you fail an account, that you don't qualify. आप उसको कैंसिल करके फिर 105 का ले लें, वो ज्यादा बेहतर है, rather than उसको रीसेट करें. Number 2, they want you to make $1,500. So cost, target, max loss limit 1,500, live trailing threshold, and infinite time and infinite money. Man, you can complete your target in 1 day, 2 days, 10 days, 100 days, 50 days, doesn't matter. They don't have any issue like that. यार देखिए, अगेन मैं बार बार उस पे आता हूँ, आप फेल हुए ना तो उनके 105 बनने. वो ये चाह रहे हैं कि बंदा आए, उसको थोड़ा सा वो क्या कर दें, खरगोश के आगे ना वो गाजर कर रहे हैं कि वो भागा है. मैं कह रहा हूँ मिनी में ना करें, आप कह रहे हैं तो फिर आप देखिए, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं ना. फिर आप ऐसा करें, पर्डिया में आ जाए, 485 देंगे, खामोश रहेंगे ना, कोई लिमिट है ना. हाँ जी, हो गया जी मेरा ख्याल है आपका. सॉरी, नहीं मैं अभी देता हूँ. तो इसमें जी आपका कोई क्वेश्चन हो और तो मैं आपको आंसर कर. देखिए, लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड से घबराएं नहीं प्लीज. ATM लगाएं, 8 टिक निकल आते हैं, 4 निकल आते हैं. और जे है उधर आता है सैटरडे को, 4 टिक्स का लेता है. नहीं ब्रेकआउट. वो कहते हैं यार 50 बन गए, मैं बाहर आ रहा हूँ. आई डोंट केयर, 50 से 500 बन जाए, मैंने 1 पॉइंट लेना है. ATM ये लगती है ना आपके चार्ट के अंदर, एक वीडियो है, हाउ टू यूज एन ATM सुपर एरियाज में. दैट मीन्स यू कैन प्री डिफाइन वंस यू टेक एन ऑर्डर what would be stop loss, what would be a TP automatically. That's called advanced trade management. हाँ, तो आप सेट कर सकते हैं. निंजा के अंदर राइट पे ऑप्शन है, सुपर एरियाज पे वीडियोस बनी हुई है, हाउ टू यूज इट. ये आज शाम को अपलोड होगी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे. सर बिल्कुल ध्यान नाल, प्यार ना पर्डिया लेके चलो. भावें $5 बने, भावें 10, सर ना इदी कोई एक्सपायरी है. एक बारी 485 देते ने, 1500 का अकाउंट खुल गया, $10 भी बन गए तो ਤੁਹਾਡੇ ही ने यार, कोई गल नहीं. ਜਦੋਂ कोई अच्छा ट्रेड नजर आया तो देखेंगे. लेकिन पहले आपने अपनी एंट्रियां ठीक करनी है. मैं बार बार कह रहा हूँ, एंट्री नहीं ठीक होगी, पर्डिया क्या, हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी.
सर ये बंद करेंगे किसी तरह, इसको अनइंस्टॉल कर दें वो ऐड एंड रिमूव से। सर एनी डेस्क दो। थैंक यू फॉर दिस इज रियली गुड। इसमें लॉगिन no tastes better than water so एटीएम की विंडो कैसे खुलती है? वो राइट पे, वो देखें एटीएम नहीं ऊपर चार्ट ट्रेडर पे, या ये राइट पे एटीएम बना हुआ है ना, वो जहाँ पे एटीएम स्ट्रेटजी लिखा हुआ है डॉम के ऊपर, ये देखें, ये एटीएम है ना, ये एटीएम, ये देख कस्टम, ये हाँ यहाँ अपना एटीएम और टीपी लगा लें। ये ऑर्डर पहले लगाते हैं, उसके बाद पहले ऑर्डर लगाएंगे, फिर डिफाइन करेंगे कौन सी एटीएम उस ऑर्डर के साथ जुड़ जाए, कितना स्टॉप लॉस हो, कितना टीपी हो। हाँ 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 बिल्कुल। नो प्रॉब्लम जी, बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे आपको मैसेज मिल गया, मैं करता हूँ। रेट अच्छा मिला है, रेट अच्छा मिला है। आई थॉट यूएस डॉलर नहीं, मुझे लग रहा था 75 तक होगा। थोड़ा सर से पूछता हूँ, जो 8 का ना थोड़ा सा रिफ्रेशर अगर सर क्लास लेते हैं आजकल। हाँ सर सैटरडे को आए ना, ये बल्कि डैनियल की सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, सुपर एरियाज पे जाएं, पूरा का पूरा लेक्चर 5 वीडियो का 20 घंटे रिकॉर्डेड है। ओके, तो वहाँ से हाँ हाँ सारा कुछ सीख सकते। ओके थैंक्स अ लॉट। एनी कल टाइम। मैंने पहला वो किया था बंदे, हाँ पहले तो मैं डेमो में ठीक है, तो वहाँ जस्ट टू हैव अ फील, ताकि आपको आप पहले वाटर टेस्ट करें ना कि इसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो हाँ हाँ सर, आप चला के आ रहे हैं रिक्शा से, आप फरारी में बैठ गए हैं, निंजा 7 और 8 में जमीन आसमान का फर्क। हेलीकॉप्टर से प्लेन में जाने नहीं वो बल्कि वो रिक्शा था, वो बेचारा हमारे तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करते करते वो प्लस माइनस में इतना। हाँ ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो एक उसमें गुड, ठीक है, ताकि आपको जैसे कहते हैं ना फीट वेट हो जाए ना थोड़ा। हो गया सर थोड़ा, थैंक यू। नो ब्रो, 4-4.5 पॉइंट्स। गुड गुड। 2 पॉइंट का टारगेट बहुत है ईएस में यार, ईए पास करने के लिए। फिर उसके बाद नहीं, कोई बात नहीं सर, जब अगर आपके मैं कहता हूँ सारों के पास ऐसा डिसिप्लिन हो जाए ना, यहाँ पर तो 9:30 बजे पता क्या लगता है, वो घोड़े भागते हैं ना रेस में, तो लगता है वो गेट ओपन हो गया तो कि भाई जी मैं ट्रेड डाल दूं 9:30। मैं देखता हूँ यार पहले देखो ट्रेंड क्या है, बेस क्या है, प्रेशर क्या है, 30 मिनट क्या कह रहा है, 60 क्या कह रहा है, कहीं जाके एरी। अब मैंने वो एनबीटी की सर्वे तो कहते हैं आप सिग्नल नहीं भेजते, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता लगेगा, कंफर्टेबल होगा, मैं क्यों भेजूंगा, राइट। सो हाँ जी, पहली नंबर 1 डैनियल की देखें आप, सुपर एरियाज पे लॉगिन करें, वहाँ ग्रीन पट्टी चल रही है, क्लिक हियर फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर वीडियोस, उस पे क्लिक करेंगे, 5 वीडियो हिंदी और 5 इंग्लिश में, सारा डैनियल के सारे लेक्चर आपके पास है, 1 2। हाँ न्यूज में क्या करना है, ग्रीन में क्या करना है, मिड बैंड क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, आरएसआई गैप सब बताया हो, वैल्यू एरिया कैसे यूज होता है, एरियाज कैसे होते हैं सारे। आज की ट्रेड मंडे की मार्केट देखिए मैं कल तो मार्केट बंद है, ठीक है, कल मार्केट बंद है, मंडे को मार्केट खुली है लेकिन स्लो होगी, रियल ट्रेडिंग ट्यूसडे को शुरू होगी। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाजी एक बारी होर देना मैनू। हाँ जी हाँ जी ठीक है, सही है। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰ ਡੀ ਆ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ 5 ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ,
ਉੱਥੇ मैं एक्चुअली अपने बेटे ने थोड़ा सर थोड़ा जो करो ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ एब्सोल्युटली सर नो प्रॉब्लम ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ सर पहले तो वीडियोस देखो पहले वीडियोस देखो 100% ਕਿੱਥੋਂ YouTube ਤੇ ਹੀ नहीं 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 सर सुपर एरियाज ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਸ ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਲੀਗਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ड्राइवर लाइसेंस तो सुपर एरियाज में हर चीज पड़ी है 5 वीडियोस जो सर मेरा बेटा मैंने उसको शुरू किया 17 साल में कि यार तू आ कुछ कर 18 साल के बर्थडे उसने एपेक्स खरीदे उसको अब ये पता लग गया है मिड बैंड क्या है एरिया क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ये 5 वीडियो बहुत हैं सारा कुछ पड़ा हुआ है उसके अंदर तो क्योंकि वरना सैटरडे संडे लेना पड़ेगा हाँ हाँ लेकिन वो पहले वो 5 लेक्चर सुन लें यस नाम 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 पूरा हाँ जी नहीं उत्ते हाँ उत्ते वाला अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ उधर रखे मेरे लिए आना ज़्यादा आसान है आपके लिए आप जाएं टूल्स में कनेक्शन में वो कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है उस पे जाएं और लेफ्ट पे पहले लेजेंड को डिस्कनेक्ट करें ठीक है अब लेजेंड्स को पे जाएं और नीचे रिमूव कर दें लेफ्ट पे तो फिर आपका लेजेंड नहीं शो अप करेगा थैंक यू जी बेस्ट ऑफ लक जी आपके पास कोई ऐसा यूटिलिटी बिल है जो ओके आपने एक सेकंड अच्छा ड्राइवर लाइसेंस पढ़ा है अच्छा किथे है जी ड्राइवर लाइसेंस ठीक है हुण ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ये ES की प्राइस चल रही है 5346 नो प्रॉब्लम बेस्ट एंट्रियां ठीक करें बाकी सोचे स्ट्रेस थोड़े पैसे खर्च के लिए कोई बाहर आ जाओ क्या चल रही है प्राइस 5351 right now सर एड्रेस ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ नहीं नहीं यूटिलिटी बिल वो उनसे पूछना है मैं अभी क्योंकि मैं भी ये पूछ ही लेता हूँ क्योंकि एक गुड क्वेश्चन बल्कि ये ले हमेशा मैं अभी ओरिजिनल बिल यूज करती है हर जगह पे तो ओरिजिनल कम करने से थोड़ा डिटेल दस है सर 5 दिन ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ
क्योंकि नवा अकाउंट आए, नवा अकाउंट बनेगा, क्योंकि उतों गलती ना होया ना जो स्लिप हो जाना। डन। पता क्या होया, नंबर काउंट करके लास्ट ईयर लेता ना ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਏ। नहीं कमीशन नहीं जोड़ी। हाँ 66% लेस रहेगा। ਐਲੀ हाँ जी नहीं हो नहीं आज ਜਿਹੜੇ 4 ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਬਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ 66 ਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। नहीं आज ही होनी है जेड़ा लास्ट ईयर करना सी ना जितना अमाउंट करने के लिए। अच्छा टारगेट रेट। अच्छा जैसे सेंट रह गए थे। जैसे सेंट रह गए जैसे ट्रेड करना गया फिर वो ट्रेड माइनस चला गया। हाँ 40 पहले 3 डॉलर गया मैं हाँ वो कटिया फिर दोबारा आया फिर ਉਹਦੇ ਜੀ एटीएम लगाया फिर जाके हो गया बट डन हो गया जी। डन सर थैंक यू जी बेस्ट ऑफ। अच्छा वो ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਾਂਗੇ ਟੂ ਵਿਡਰਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ नहीं 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ सिटी वाइज हाँ नहीं एक्टिव होना चाहिए। ऑलराइट सी यू गाइस ऑन नहीं ओदी नहीं जरूरत वाइज बस। ऑलराइट सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे टेक केयर। ठीक ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1-on-1 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਲੋ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। मेरी जॉब इतनी मुश्किल है नहीं मुझे पता क्या जॉब मुश्किल लगती है। अगर आपने डैनियल की देखी हो, वो टीचिंग के 4 के बाद फ्लोर पे बात नहीं करते थे। देखें कभी भी ट्रेड की बात नहीं करते, वो कहते मैंने आपको सिखाया हुआ खुद ट्रेड डालें। अब मेरा मसला ये है कि मैंने ट्रेड भी करना है, सिखाना भी है, पढ़ाना भी है। 10 तो एनी डेस्क आ जाते हैं सुबह 9:30 बजे राइट। और मेरे लिए क्या मसला है, कभी पीए लॉस हुआ हो ना और अगले दिन मैंने आपको टीच करना हो और मेरा दिल नहीं करता यहाँ बैठने का, क्योंकि मेरा पीए का हुआ होता है कि यार या मैंने रिक्वेस्ट हाँ तो वो इट इज टफ जॉब टू सिट हियर। ओ इतनी यहाँ खड़ा हुआ था मैं और डॉक्टर संदीप यहाँ बैठे थे लाइव। यहाँ पर पीए में मैंने 5 MNQ डाले हुए थे और मैंने 1200 बने हुए थे एपेक्स में साल पहले। इंटरनेट हमारा गया, डॉक्टर साहब हम पैनिक कर गए, हॉटस्पॉट ऑन करते करते 5 MNQ ने मेरे 15 उस दिन के बाद। और फिर ऐसी मिस्टेक्स टेक्निकल हो जाती है एंट्री में नहीं। तो फिर मैंने कहा मैंने भाई शिकागो उस क्रिसमस में गया, होस्टिंग कंपनी ढूंढी, वहां मैंने अपने सर्वर लगाए कि आई एम नॉट पुटिंग माय, क्योंकि मेरे एक अकाउंट नहीं है ना, 40 50 अकाउंट चल रहे हैं, कॉपियर चल रहे हैं, तो 500 ते आ गई जी। मेरा ख्याल है कि आज जो जड़ा ना उन्होंने सारा ही खत्म कर देता। लो जी टेक केयर, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।